Hello. Today we will discuss chapter number 7, External Analysis Economic Factors. In this previous chapter, we will discuss external analysis, political and legal factors. In this video, we will discuss external analysis economic factors. एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे फैक्टर इम्पैक्ट करते हैं, इसके लिए हम एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं। तो पेस्टल एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसको हम यूज करके एक्सटर्नल एनालिसिस कर सकते हैं हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, जिसमें पी से है पॉलिटिकल, ई से है इकोनॉमिक, एस से है सोशल, टी से है टेक्नोलॉजिकल, ई से है एनवायरमेंटल, एल से है लीगल। पॉलिटिकल और लीगल हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था। चैप्टर नंबर 7 में हम इकोनॉमिक फैक्टर का एक्सटर्नल एनालिसिस करेंगे। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर्स के लिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं कि क्या हमारे बिजनेस के लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, क्या हमारे लिए थ्रेट्स हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं। एक्सटर्नल एनालिसिस मींस एग्जामिन द इंडस्ट्री एनवायरनमेंट ऑफ अ कंपनी। तो एक्सटर्नल एनालिसिस का मतलब होता है कि हम एग्जामिन करते हैं, हम असेस करते हैं इंडस्ट्री एनवायरनमेंट ऑफ कंपनी की, कंपनी का एनवायरनमेंट कैसा है, उसको कौन कौन से फैक्टर इम्पैक्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग फैक्टर्स सच एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर, कॉम्पिटिटिव पोजीशन, डायनामिक्स एंड हिस्ट्री की क्या थ्रेट्स है, क्या एडवांटेज है। तो इन सारी चीजों को हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं। ऐसे फैक्टर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर रहे हैं, इम्पैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल एनालिसिस इकोनॉमिक फैक्टर। तो यहाँ पे हम इकोनॉमिक फैक्टर का एक्सटर्नल एनालिसिस करेंगे। तो ये चैप्टर का मीनिंग था। ये चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है। यहाँ पे हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। एक्सप्लेन करेंगे इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ कॉस्ट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में। मार्केट पढ़ेंगे, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड मोनोपोली। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। डिटरमिनेंट्स ऑफ लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इन इकोनॉमी। Explain the impact of economic issue in individual, household, and business, in inflation, unemployment, economic growth, in international payment, disequilibrium. Main types of economic policy पढ़ेंगे। Describe impact of fiscal और monetary policy का क्या इम्पैक्ट है, उसको कैसे मेजर करते हैं on the individual, household, and business. एक्सटर्नल एनालिसिस, यहाँ पे हम इकोनॉमिक फैक्टर का एक्सटर्नल एनालिसिस करेंगे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन से फैक्टर है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम इकोनॉमिक फैक्टर का एक्सटर्नल एनालिसिस करेंगे। तो एक्सटर्नल एनालिसिस के अंदर सबसे पहले आता है इकोनॉमिक्स। टू टाइप्स की होती है, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक जो कि हम इंडिविजुअल लेवल पर बात करते हैं, और एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक जबकि हम एक ग्लोबल लेवल पर बात करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक का मतलब होता है इंडिविजुअल, मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब होता है ग्लोबल लेवल पे। माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर हम देखेंगे सप्लाई एंड डिमांड क्या होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, कॉस्ट बिहेवियर क्या होता है, और टाइप्स ऑफ मार्केट क्या होता है। फिर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का डिफरेंस देखेंगे। क्लासिकल वर्सेस सप्लाई साइड, डिमांड साइड देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग एस एक्सपेंडिचर स्विचिंग। तो इस चैप्टर के अंदर चलेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर आल्सो एक्सप्लोर्ड इन द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एग्जामिनेशन। तो मार्केट स्ट्रक्चर को और आगे आप एक्सप्लोर करोगे आपके स्किल लेवल के एग्जाम में, जिसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एग्जामिनेशन। Okay, we will start the chapter. Introduction. Part of an organization
external pest analysis will involve assessing the economic factors which will affect its industry. तो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पार्ट है जहाँ पे हम पेस्ट का एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल। तो यहाँ पे हम असेस करते हैं हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स को और ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो हमारे इंडस्ट्री को अफेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनका हम असेस करते हैं और यहाँ पे हम एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं। द की इशू इज टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। एक्सटर्नल एनालिसिस करने का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव भी यही है कि हमारे को की इशू को आइडेंटिफाई करना है कि हमारे लिए क्या क्या पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी है और हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या थ्रेट्स हैं। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है एक्सटर्नल एक्सटर्नल एनालिसिस करने का। इकोनॉमिक्स कैन बी डिफाइंड इन वेरियस वे इंक्लूडिंग, तो इकोनॉमिक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं वेरियस में। The study of how society allocate scarce resources, कि कैसे सोसाइटी अपने स्केयर स्केयर को हम बोलते हैं लिमिटेड, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को अलोकेट करेगी, ये भी हम पढ़ेंगे इसके अंदर। which have alternative uses between competing ends, the study of wealth creation. It is useful to distinguish between two aspects of economics. First, microeconomics. Second, macroeconomics. We will discuss microeconomics. Microeconomics is the study of the economic behavior of individual, consumer, firms, and industry. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जनरली इकोनॉमिक बिहेवियर की स्टडी करता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी करता है? इकोनॉमिक बिहेवियर, जहाँ पे वो स्टडी करता है इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म्स और इंडस्ट्री। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जनरली इकोनॉमिक बिहेवियर की स्टडी करते हैं, जहाँ पे हम कंज्यूमर, फर्म और इंडस्ट्री की बात करते हैं, इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स। सेकेंड, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसीडर एग्रीगेट बिहेवियर। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तब हम एक एग्रीगेट बिहेवियर की बात करते हैं, and the study of the sum of individual economic decisions, in other words the working of the economy as a whole. मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जनरली एग्रीगेट बिहेवियर पे बात करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। हम पूरे इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं उसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ इंडिविजुअल कंज्यूमर, फर्म्स और इंडस्ट्री की बात करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरे होल इकोनॉमी की बात करते हैं। ठीक है, we will consider macroeconomics later in this chapter. Okay, microeconomics. What is microeconomics? Defining microeconomics. Microeconomics focuses on how the individual parts of an economy make decisions about how to allocate scarce resources. As mentioned, these individual parts include consumer, firms, and industries. तो माइक्रोइकोनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रोइकोनॉमिक्स जनरली फोकस करता है हमारे इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ एन इकोनॉमी में, मेक डिसीजन अबाउट हाउ टू अलोकेट स्केयर रिसोर्सेज, कि हम कैसे हमारे लिमिटेड स्केयर रिसोर्सेज को हम अलोकेट करेंगे। एज मेंशन दिस इंडिविजुअल पार्ट, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल पार्ट्स की, जैसे कि कंज्यूमर, फर्म्स एंड इंडस्ट्री। Microeconomics attempt to examine how supply and demand decisions made by these individuals affect the selling price of goods and services within an industry or market. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम एग्जामिन करते हैं कि कैसे सप्लाई और डिमांड के डिसीजन से एक इंडिविजुअल अफेक्ट हो सकता है उसकी सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज से विद इन इंडस्ट्री और मार्केट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम जनरली इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम एग्जामिन करते हैं कि कैसे सप्लाई और डिमांड के डिसीजन से एक इंडिविजुअल अफेक्ट हो सकता है उसकी सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन एन इंडस्ट्री और मार्केट। ओके, डिमांड। नेक्स्ट टॉपिक इज डिमांड। व्हाट इज डिमांड?
individual demand. Individual demand show how much of a goods or services someone intend to buy at different prices. इंडिविजुअल डिमांड का मतलब ये होता है कि इंडिविजुअल डिमांड जनरली इंडिविजुअल के बारे में बात करती है। तो इंडिविजुअल डिमांड शो हाउ मच ऑफ गुड्स और सर्विस। तो इंडिविजुअल डिमांड जनरली जो गुड्स और सर्विस जो एक इंडिविजुअल उसकी इच्छा रखता है बाय करने की डिफरेंट प्राइसेस। जब एक इंडिविजुअल विलिंग टू बाय और विलिंग टू पे और इच्छा रखता है किसी गुड्स और सर्विस को परचेस करने के लिए, उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। Individual demand show how much of a goods or service someone intended to buy at different price. तो जब एक इंडिविजुअल गुड्स और सर्विस की डिमांड करता है और वो अपने अंदर इच्छा रखता है, इंटेंट दिखाता है और बाय करता है डिफरेंट प्राइसेस पे, तो उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। This demand needs to be effective in that consumer need to have the cash available to buy the goods। उसके पास इच्छा भी होनी चाहिए गुड्स को बाय करने की और सर्विस, रादर देन जस्ट जनरली डिजायरिंग देम। इच्छा से कुछ नहीं होता, उसके पास मनी भी होना चाहिए गुड्स और सर्विस को बाय करने के लिए। व्हेन कंसीडरिंग द लेवल ऑफ डिमांड एट अ गिवन प्राइस, हम लेवल ऑफ डिमांड को कंसीडर करते हैं गिवन प्राइस। वी अज्यूम दैट द कंडीशन ऑफ डिमांड अदर वेरिएबल, हम ये अज्यूम करते हैं कि जो कंडीशन ऑफ डिमांड और अदर वेरिएबल है क्या होते हैं, कांस्टेंट, हेल्ड कांस्टेंट। डिमांड टेंड टू बी हायर एट अ लो प्राइस, डिमांड टेंड टू बी हायर एट लो प्राइस। अगर आपकी प्राइस लो है इसका मतलब आपकी डिमांड्स क्या है, हाई है। लोअर एट अ हाई प्राइस फॉर मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज, तो डिमांड टेंड टू बी हायर एट अ लो प्राइस, लोअर एट अ हाई प्राइस फॉर मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज। When the demand for goods or services change in response to a change in its price, जब एक गुड्स और सर्विस की डिमांड के अंदर रिस्पॉन्स से चेंज आता है तो उसकी प्राइस भी आता है। तो व्हेन द डिमांड फॉर गुड्स और सर्विस चेंज इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन प्राइस, अगर प्राइस में चेंज आता है तो उसकी डिमांड में भी रिस्पॉन्स आता है और वो चेंज की किस वजह से आता है। द चेंज इज रेफर्ड टू एज एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। What is expansion? An expansion in demand rise when the price fall। जब हमारी प्राइस कम होती है, मतलब कि जब हमारी प्राइस फॉल होती है, कम होती है, इसका मतलब हमारी डिमांड बढ़ती है, मतलब कि डिमांड राइजेस। व्हेन प्राइस फॉल डिमांड राइजेस, इसका मतलब क्या है, एक्सपांशन। अ कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एज डिमांड फॉल व्हेन द प्राइस राइज। जब हमारी प्राइस बढ़ती है तो हमारी डिमांड क्या होती है, कम होती है। तो व्हेन द प्राइस राइज demand fall, this is known as contraction। Thus in the diagram below, the demand curve D illustrate a normal downward sloping curve। तो डिमांड कर्व का शेप कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, एंड मूवमेंट along this curve as the price change would be called as a contraction in demand। जनरली डिमांड कर्व का शेप कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग दिस डिमांड कर प्राइस चेंज होने के कारण उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन डिमांड। प्राइस राइजिंग, कि जब प्राइस बढ़ती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो व्हेन प्राइस इज राइजिंग उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और एक्सपांशन इन डिमांड कब बोलेंगे, जब प्राइस हमारी कम होती है। तो व्हेन प्राइस इज फॉलिंग, एक्सपांशन इन डिमांड। व्हेन प्राइस इज राइजिंग, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। जब प्राइस हमारी बढ़ती है तो हमारी डिमांड कम होती है, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। व्हेन प्राइस इज सोलिंग, जब हमारी प्राइस कम होती है और डिमांड बढ़ती है, इसको हम बोलते हैं एक्सपांशन इन डिमांड। ठीक है, सबसे पहले प्राइस हमारी थी P1, तो हमारी डिमांड कितनी थी, D1। जैसे ही हमारी प्राइस बढ़ गई, जैसे ही हमारी प्राइस बढ़ गई, देखो जैसे हमारी प्राइस बढ़ी डिमांड कम हो गई। सबसे पहले हमारी पहले प्राइस फॉल थी तो हमारी डिमांड ज्यादा थी। जैसे ही हमारी प्राइस कम हुई जैसे डिमांड बढ़ गई, और जैसे हमारी प्राइस बढ़ गई ऐसे हमारी डिमांड कम हो गई। ठीक है, तो ये डायग्राम है।
पहले P1 थी तो हमारी डिमांड कितनी थी, D1। जैसे हमारी प्राइस कम हुई तो डिमांड बढ़ती, ये Q2 D2 पे आ गया। तो ये प्राइस प्राइस को हम शो करते हैं y एक्सिस में, क्वांटिटी को शो करते हैं हम x एक्सिस में। फॉर मोस्ट गुड्स द लोअर द प्राइस हायर विल इट्स डिमांड। अगर आपकी प्राइस लो होगी तो मतलब कि कंज्यूमर ज्यादा आपके गुड्स खरीदेंगे तो आपकी डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। दिस इज रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस। ये किस वजह से हो सकता है? सबसे पहला, देयर इज एन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहते हैं? देयर, दिस इज वेयर अ कंज्यूमर बाय मोर ऑफ वन गुड और लेस ऑफ अनदर बिकॉज ऑफ रिलेटिव प्राइस चेंजेस। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? जब एक कंज्यूमर गुड्स खरीदता है मोर ऑफ वन गुड, ऐसे में लेस ऑफ अनदर बिकॉज ऑफ रिलेटिव प्राइस चेंज, दूसरे गुड्स में क्या होता है, उसकी प्राइस में चेंज आ जाता है, उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। Thus, if two goods are substitute, fall in the price of first. अगर जब दो गुड्स क्या है आपस में सब्स्टिट्यूट है तो एक गुड्स में क्या है हमेशा उसकी प्राइस कम हो जाएगी, प्राइस fall in the price of first will lead consumer to switch some demand to lower price good। ऐसे में जो कंज्यूमर है वो अपनी डिमांड क्या कर देंगे, स्विच कर देंगे लोअर प्राइस गुड्स की तरफ, सब्स्टिट्यूटिंग द फर्स्ट गुड्स फॉर द सेकंड। सेकंड है हमारा इनकम इफेक्ट। इनकम ज्यादा आएगी whenever consumer income increase, demand will increase. So there is an income effect. There is where a change in price of a goods affect the purchasing power of consumer। कि कंज्यूमर की परचेसिंग पावर कितनी है, तो कंज्यूमर की परचेसिंग पावर से भी अफेक्ट होती है प्राइस। तो देयर इज वेयर अ चेंज इन प्राइस ऑफ अ गुड्स अफेक्ट द परचेसिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की परचेसिंग पावर की वजह से भी प्राइस में इफेक्ट अफेक्ट्स आते हैं। चेंज इन देयर रियल इनकम, क्योंकि उनकी रियल इनकम में चेंज आ गया। इफ अ प्राइस ऑफ गुड्स फॉल, जब एक गुड्स की प्राइस कम रहेगी, जब एक गुड्स की प्राइस कम होगी इसका मतलब जनरली उसकी डिमांड ज्यादा होगी। इफ अ प्राइस ऑफ अ गुड्स फॉल, द कंज्यूमर एक्सपीरियंसेस अ राइज इन देयर रियल इनकम। तो जब एक गुड्स की प्राइस कम होगी ऐसे में कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ेगी, एज अ रिजल्ट टेंड टू बाय मोर ऑफ ऑल नॉर्मल गुड्स और सर्विस। तो ऐसे में वो ज्यादा गुड्स को परचेस करेगा। Individual demand. K Private Limited Company is a motor car manufacturer. The company may find that if it raise the price of its car, अगर अपनी कंपनी कार की प्राइस को बढ़ा रही, रेस कर रही, रेसेस, rises the price of its car, the demand for its vehicle and therefore number of car companies sell will fall। तो ऐसे में जो कंपनी की जो कार है क्या आएगी, कम मार्केट में सेल होगी, the number of car company sell will fall, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, fall। This could be due to first is substitution effect की वजह से हो रहा है ये। There is a large number of car manufacturers, जो कि large number of car manufacturer है और customer can choose between। If K rises its price, अगर K अपनी प्राइस को बढ़ाता है तो इससे क्या होगा, it may become more expensive than its rival। उसके competitive rival से क्या हो जाएगा, expensive हो जाएगा, leading customer to switch lower price alternative। तो ऐसे में customer switch कर देंगे lower price alternatives में। K cell may also suffer because of income effect. Why? Car are expensive. Car के expensive, costing a high proportion of consumer income. If K price its car too high a price, अगर K की कार की प्राइस हाई है, ऐसे में क्या होगा, many of its customer may simplify become unable to afford the product। तो ऐसे में जो उसके कस्टमर है वो कार को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लीडिंग टू ड्रॉप इन डिमांड। और ऐसे में उसकी डिमांड क्या आ जाएगा, ड्रॉप आ जाएगा। तो लीडिंग टू अ ड्रॉप इन डिमांड। इन मोस्ट केसेस द इनकम इफेक्ट इज रिलेटिवली वीक। हाउएवर, if expenditure on the good is a large proportion of consumer income, in the case of house purchase the effect will be relatively large। ठीक है, तो अभी अपन ने पढ़ा था कि इंडिविजुअल डिमांड क्या है, अब हम पढ़ेंगे मार्केट डिमांड। Market demand show the total amount of effective demand from all the consumer in a market। तो जितने भी मार्केट में कंज्यूमर है उन सब की टोटल डिमांड, उन सब की टोटल इफेक्टिव डिमांड को क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड क्या है, मार्केट डिमांड जनरली टोटल अमाउंट ऑफ इफेक्टिव डिमांड किसकी,
फ्रॉम ऑल द कंज्यूमर इन मार्केट, जितने भी मार्केट में कंज्यूमर हैं उनकी इफेक्टिव डिमांड का टोटल, इसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड इज यूजुअली shortened to demand and represented by a straight line curve on a graph. Straight line curve on a graph. The demand curve for most normal goods is relatively inclined, slope downward from left to right over the reason explained in the previous section. Condition of demand, demand की condition क्या है? Condition of demand, individual and market demand consider exclusively the influence of price on the quantity demand. तो individual और market demand जनरली ये प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं ऑन द क्वांटिटी डिमांड, assuming other factor क्या है constant. These factor term the condition of demand will now be considered with price at constant. Any change in one or more of its condition of demand will create shift in demand curve itself. तो अगर इनमें से किसी तरह से कंडीशन ऑफ डिमांड में चेंज आता है तो इससे वो शिफ्ट हो जाती है डिमांड का, डिमांड पे शिफ्ट हो जाता है। इन द शिफ्ट, इफ द शिफ्ट इन द डिमांड कर्व इज आउटवर्ड, अगर डिमांड कर्व शिफ्ट होता है आउटवर्ड, इसका मतलब राइट साइड, इसका मतलब आपकी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अगर आपका जो डिमांड कर्व शिफ्ट होता है आउटवर्ड, इसका मतलब क्या है, टू द राइट, सच अ राइट शिफ्ट कॉल्ड एन इंक्रीज इन डिमांड, मतलब कि आपकी डिमांड बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। और अगर आपकी जो डिमांड करे वो शिफ्ट होता है इनवर्ड, मतलब कि लेफ्ट साइड, इसका मतलब क्या है, सच अ लेफ्ट सच अ शिफ्ट इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड। तो ऐसे में आपकी डिमांड कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अगर आपका डिमांड कर्व शिफ्ट होता है राइट वर्ड, इसका मतलब आपकी डिमांड इंक्रीजिंग डिमांड है। अगर आपका डिमांड कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है, इसका मतलब है कि आपकी डिमांड डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन डिमांड। It is important to distinguish such increase and decrease in demand that result from a shift in demand curve as a whole from expansion and contraction in demand that result from price changes leading to movement along the demand curve itself. तो अगर ये लेफ्ट साइड जाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, और अगर ये राइट साइड जाता है तो एक्सपांशन ऑफ डिमांड। एरो का मतलब होता है कि डिमांड आपकी शिफ्ट हो रही है। द मेन कंडीशन दैट अफेक्ट डिमांड, ऐसे कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पे हमारी डिमांड अफेक्ट हो रही है। फर्स्ट, इनकम, इनकम से भी क्या होती है, हमारी डिमांड अफेक्ट हो रही है। चेंज इन इनकम ऑफन अफेक्ट डिमांड, अगर आपकी इनकम चेंज हो रही है तो आपकी डिमांड भी अफेक्ट हो रही है। लोअर डायरेक्ट टैक्सेस रेज डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, ऐसी इनकम जिसमें आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया है, अब जो बची हुई इनकम है उसको हम बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। तो अगर गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स को कम करेगी तो ऐसे हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, इंक्रीज द डिस्पोजेबल इनकम। अदर थिंग बीइंग इक्वल, may consumer better off, this might cause less demand for necessities and more demand for luxuries. Over time, improvements in the standard of living have led to greater spending on service and leisure activity. Furthermore, if average wage increase exceeds the rate of inflation, consumer will become better off in real terms and thus have greater flexibility and scope in the use of their income. There are also inferior goods. Inferior goods क्या होते हैं? जैसे जैसे हमारी इनकम, जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होगी, ऐसे ऐसे हम इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे। तो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी, ऐसे ऐसे इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या होगी, कम होगी, क्योंकि अब हम इंफीरियर गुड्स को खरीदेंगे नहीं। तो a rise in income leads to a lower demand for its product is consumed। मैंने आपको अभी बताया, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी ऐसे ऐसे आपकी inferior goods की डिमांड कम होगी, product is consumed। Now with richer, now with richer substitute better quality prefer goods and service for the original inferior goods or service। An example of this is the public transport here has income rise, the demand for public transport fall। अगर इनकम बढ़ रही, एग्जाम्पल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डिमांड कम करोगे। क्यों? क्योंकि सबकी इनकम बढ़ रही है तो सब अपनी अपनी कार से ट्रैवल कर सकते हैं। तो कंज्यूमर के पास सब्स्टिट्यूट, कंज्यूमर के सब्स्टिट्यूट ऑप्शंस हैं। तो कंज्यूमर का सब्स्टिट्यूट ऑप्शन है प्राइवेट ट्रांसपोर्ट व्हीकल सच एज कार्स,
बाइक्स एक्सेट्रा। टेस्ट से भी क्या होती है, डिमांड आपकी अफेक्ट होती है। टेस्ट इन पर्टिकुलर फैशन, अगर आपकी फैशन चेंज होगी, फ्रीक्वेंटली चेंज होगी, तो ऐसे में डिमांड में भी अफेक्ट आएगा। चेंज मेक द डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स volatile. For instance, concern about health have increased the demand for brown bread and vegetable oil at the expense of white bread and animal fats. Tastes, of course, can be manipulated by advertising and producers to try to create markets, particularly for ostentatious goods, for example, air conditioner, which our ancestors survived perfectly well without. Some goods are in seasonal demand, example cooked meat, even though they are available all year round because tastes change. More salads are consumed in the summer. The price of other goods की प्राइस से भी डिमांड में अफेक्ट आता है. Goods may be unrelated or they may be complements or substitute for each other. The former have no effect but the latter two are significant. If goods are in joint demand, complements such as car and tire, a change in the price of one will affect the other also. Therefore, if the price of car fall, demand to them will rise, meaning there is likely to be an increase in demand for tire. Where goods are substituted, example quality street chocolates and roast chocolates, a rise in the price of one will cause an increase in demand for the other. Thus, the demand curve will shift to the right. पॉपुलेशन की वजह से भी डिमांड अफेक्ट आता है. ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो ज़्यादा गुड्स और सर्विस कंज्यूम करेंगे. इंक्रीज इन पॉपुलेशन क्रिएट लार्जर मार्केट फॉर मोस्ट गुड्स, thereby shifting demand outward. Changes in population distribution will also affect demand pattern. If the proportion of old people relative to young people increase, then there will be an increase in demand for products such as wheelchair and care homes when compared to demand for cots and nappies. In the analysis of how the demand and supply model work, the distinction between increase, decrease in demand and expansion, contraction in demand are very important. Remember, if a price change occurs, there will be movement along the demand curve. Result will either an expansion हुआ है या तो contraction हुआ है demand. अगर price change होती है तो condition of demand change इसका मतलब क्या है कि demand में shift हुआ है या तो right या left. So there will be shift in demand curve. Result will either increase हुआ है decrease in demand. तो अगर price में change आता है इसका मतलब आपका demand curve movement along demand curve हुआ है या तो expansion हुआ है या contraction हुआ है in demand. अगर demand में change आता है तो या तो demand पर आपको shift हुआ है increase right या decrease in demand left. Test your understanding one. Which of the following would not lead to shift in demand curve for overseas holiday? इनमें से कौन सा shift in demand curve overseas holiday से नहीं हो सकता है? Not lead to shift in demand curve for overseas holiday. इनमें से shift in demand overseas holidays के अंदर कौन सा नहीं हो सकता? And advertising campaign by holiday tour operator. ओके, ये तो नहीं हो सकता है. क्या एडवर्टाइजिंग कैंपेन होगा हॉलिडे टूर ऑपरेटर्स का? क्या डिस्पोजेबल इनकम कम आएगी कंज्यूमर की? प्राइस ऑफ डोमेस्टिक हॉलिडे राइज हो जाएगी? ये भी नहीं. इसका करेक्ट आंसर है कि एक्सचेंज रेट के अंदर राइज हो जाएगी डोमेस्टिक करेंसी. तो राइज इन द एक्सचेंज रेट फॉर द डोमेस्टिक करेंसी. करेक्ट आंसर इज डी. व्हाई? क्योंकि जब फॉरेन करेंसी की प्राइस के अंदर चेंज आएगा, चेंज द प्राइस ऑफ फॉरेन वॉलेटिलिटी लीड्स टू मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. तो जब अगर फॉरेन हॉलिडेज की प्राइस में चेंज आएगा तो इससे हमारा डिमांड कर्व मूवमेंट होगा, ना कि इससे शिफ्ट होगा. शिफ्ट नहीं होगा इससे. नॉट अ शिफ्ट इन द कर्व. हमारा शिफ्ट नहीं होगा. तो ये क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा इसमें से शिफ्ट नहीं होगा. नॉट लीड टू अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. तो ये नहीं होगा. अ राइज इन द एक्सचेंज रेट फॉर द डोमेस्टिक करेंसी. तो करेक्ट आंसर इज डी. Next topic, elasticity of demand. What is elasticity of demand?
Elasticity generally refer to the relationship between two variables and measure the responsiveness of one dependent variable to a change in another independent variable. There are several types which are useful to economists. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जनरली ये दो वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप होता है कि अगर हमने प्राइस को चेंज करा तो डिमांड में कितना रिस्पॉन्सिव चेंज आता है, उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जनरली टू वेरिएबल के मेजर टू वेरिएबल को मेजर करता है, द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन डिपेंडेंट वेरिएबल टू अ चेंज इन अनदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आपने प्राइस को चेंज करा तो डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है, उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर से, अगर आपने आपकी प्राइस को चेंज करा अगर आपने आपकी प्राइस को चेंज करा तो प्राइस को चेंज करने से डिमांड में कितना रिस्पॉन्सिव चेंज आता है, उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो परसेंटेज ऑफ चेंज इन प्राइस ड्यू टू अफेक्ट change in demand is known as elasticity of demand. Price elasticity of demand. What is price elasticity of demand? These concepts explain the relationship between change in quantity demand and change in price. प्राइस को चेंज करने पर आपकी क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आता है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जनरली ये आपको रिलेशनशिप बताती है क्वांटिटी और प्राइस के, कि आपने प्राइस को चेंज करने से आपकी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। This is known as price elasticity of demand. Price elasticity of demand explain the responsiveness of demand to change in price. प्राइस को चेंज करने से आपकी डिमांड में कितना रिस्पॉन्स आता है, कितना चेंज आ रहा है, उसको हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। The coefficient of price elasticity of demand (PED) is calculated by percentage change in quantity demanded, percentage change in price। तो प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है, इसकी वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस एंड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या होता है? प्राइस को चेंज करने से आपकी डिमांड में कितना रिस्पॉन्स आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है। दिस इज नॉन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट इज क्रिटिकल दैट परसेंटेज और प्रोपोर्शनल चेंजेस आर यूज्ड rather than absolute one. We need to use the percentage movement in quantity demand and price rather than the price change in the number of units demanded or actual selling price movement. Note that if a percentage change is negative, the minus sign is typically ignored. अगर आपका percentage change negative आता है तो ऐसे में हम minus sign को ignore करेंगे। क्या करेंगे? Ignore. A summary of price elasticity is given below. Relatively inelastic. रिलेटिवली इन इलास्टिक को हम बोलते हैं लेस देन वन। इसका मतलब क्या होता है? हमने प्राइस को तो चेंज करा पर डिमांड में प्राइस से कम चेंज हुआ। अगेन, हमने प्राइस को चेंज करा पर डिमांड में कम चेंज आ रहा है, उसको हम बोलते हैं लेस देन वन। कि प्राइस से डिमांड में कम चेंज आ रहा है, उसको हम बोलते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक। एग्जाम्पल इसका टी एंड सॉल्ट। तो रिलेटिवली इन इलास्टिक क्या होता है? मीन्स that a change in price has a smaller impact on demand than expected। मतलब कि आपने आपकी प्राइस को चेंज करा पर डिमांड में स्मॉलर चेंज आ रहा है, डिमांड में प्राइस से कम चेंज आ रहा है, लेस देन चेंज आ रहा है, उसको हम बोलते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक। मीन्स दैट अ चेंज इन प्राइस हैज अ स्मॉलर इम्पैक्ट ऑन डिमांड देन एक्सपेक्टेड। एग्जाम्पल है इसका टी एंड सॉल्ट। टी की प्राइस कितनी भी हो जाए और सॉल्ट की प्राइस कितनी भी हो जाए, क्योंकि वो क्या है, नेसेसरी गुड्स हो गए। अगर सॉल्ट की प्राइस में इम्पैक्ट आता भी है, अगर सॉल्ट की प्राइस ज़्यादा भी हो जाएगी तो भी सॉल्ट मार्केट में सेल होना ही होना है, क्योंकि हमने प्राइस को तो चेंज करा पर डिमांड में कम चेंज आ रहा है, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, स्मॉल इम्पैक्ट आ रहा है।
तो प्राइस को चेंज करने में जब डिमांड में कम चेंज आता है, लेस देन चेंज आता है, उसको हम बोलते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक। फिर आता है हमारा यूनिट इलास्टिसिटी। यूनिट इलास्टिसिटी का मतलब होता है इक्वल प्रोपोर्शनल। यूनिट इलास्टिसिटी means that a change in one variable result in equally proportional change in another variable। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने एक वेरिएबल में चेंज करा, वो उसके इक्वली प्रोपोर्शनल है चेंजेस इन अनदर वेरिएबल। फिर आता है हमारा रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब होता है लेस देन वन। आपने प्राइस को तो चेंज करा, पर डिमांड में प्राइस से ज्यादा चेंज आ रहा है। अगेन, रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन वन। क्या होता है? मोर देन वन या ग्रेटर देन वन। आपने प्राइस को चेंज करा, पर डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है। प्राइस को चेंज करने से डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है, ग्रेटर चेंज आ रहा है डिमांड पे, उसको हम बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक। Relatively elastic means that the quantity demanded or supply of goods or service is very responsive to change in price। आपने प्राइस को तो चेंज करा, पर उसकी डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है, ग्रेटर चेंज आ रहा है, उसको हम बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक। तो रिलेटिवली इन इलास्टिक होता है हमारा लेस देन वन, यूनिट इलास्टिक होता है हमारा इक्वल टू वन, और रिलेटिवली इलास्टिक होता है हमारा मोर देन वन। इसका बेस्ट एग्जांपल है थिएटर टिकट्स, एयर ट्रैवल। Illustration 1, price elasticity demand. Suppose we are currently selling a product at a price $20 with a resulting demand 5 lakh units per annum. A marketing manager has suggested dropping the price $19. Claim that demand rises to 5 lakh 50,000 units. Calculate the price elasticity of demand. सबसे पहले आपको परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है, और आपको परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकालना है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलता है? न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइड बाय ओल्ड प्राइस इनटू 100। परसेंटेज चेंज इन डिमांड, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइड बाय ओल्ड डिमांड इनटू 100। फिर आपको निकाल देना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग टू। If private limited company produce a popular product F1200, currently it sell 15,000 units of this product each year at a price €55 per unit. The company is now looking at whatever it could make high profit by increasing the sale price. Market research has indicated that if it increase the sale price F1200 to €60 per unit, demand would be fall 12,000 units. Calculate the price elasticity of demand for the F1200 and comment on your result. सबसे पहले आपको निकालना है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। वो कैसे निकलता है? न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस इनटू 100। फिर आपको निकालना है परसेंटेज चेंज इन यूनिट्स, ये डिमांड, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड इनटू 100। फिर आपको निकालना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो हमने ऊपर एक फॉर्मूला पढ़ा था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आएगा इससे 2.20। सिंपल है, इसके जैसा ये इलस्ट्रेशन आपकी तरफ सेम है। नेक्स्ट, द लिंक बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टोटल रेवेन्यू। क्या लिंक रिलेशनशिप है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और टोटल रेवेन्यू के बीच में? द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय एग्जामिनिंग टोटल रेवेन्यू। दिस मेथड इज यूजफुल टू बिजनेस पीपल। इफ टोटल रेवेन्यू इंक्रीज फॉलोइंग अ प्राइस कट, देन डिमांड इज प्राइस इलास्टिक। अगर आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ता है, ऐसे में आपकी प्राइस कट मतलब कम होती है, ऐसे में आपकी जो डिमांड है प्राइस की वो क्या रहेगी? इलास्टिक रहेगी। इलास्टिक का मतलब क्या हो गया? मोर देन वन। इफ टोटल रेवेन्यू इंक्रीज, अगर आपका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होता है और आपकी प्राइस भी इंक्रीज हो रही है, तो ऐसे में आपकी डिमांड, जो डिमांड इस प्राइस वो क्या रहेगी? आपकी इनइलास्टिक। फिर से, अगर आपका टोटल रेवेन्यू, आपकी प्राइस हमने कम कर दी और आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, ऐसे में आपकी जो डिमांड है, डिमांड इस प्राइस वो रहेगी आपकी इलास्टिक, मोर देन वन। और अगर आपने प्राइस भी बढ़ा दी और आपका टोटल रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, तो ऐसे में आपकी डिमांड इस प्राइस क्या रहेगी? इनइलास्टिक, लेस देन वन। Conversely, if a total revenue fall after a price cut, then the demand is inelastic, and after a price rise, it is elastic.
total revenue remain unchanged, then demand is of unitary elasticity. फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को? तो देयर आर सेवरल फैक्टर व्हिच डिटरमाइन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. फर्स्ट, proportion of income spent on the good. Where a substitute where a good constitute a small proportion of consumer income spent, a price change will be unlikely to have much impact. Therefore, price elasticity of demand tend to be slow when spending on a good is a small proportion of available income. Whereas where a good represents a large proportion of consumer income, example designing brand clothing, consumer is said to possess a more elastic demand. Second, substitutes. If there are close and available substitute for a product, then an increase in its price is likely to cause a much greater fall in the quantity demanded as consumer buy a suitable alternative. Demand for a specific breakfast cereal cereal may be fairly elastic because there are many competing brands in the market. In contrast, the demand for a unique product such as time form, race horses, annual for racing, enthusiasts enthusiasts will tend to be inelastic. Enthusiast. Enthusiast. Necessity. The demand for essentials such as sugar, milk, and bread tend to be stable and inelastic. Conversely, luxury items such as foreign skin holiday are likely to be fairly elastic in demand. It is interesting to note that improvement in living standard boosts certain commodities such as television from the luxury to the necessity category. Habit. When goods are purchased automatically without customer perhaps being fully aware of their price, for example milk or perhaps newspaper, the demand is inelastic. This also applies to addictive products such as cigarettes and drugs. Time. In the short run, consumers may be ignorant of possible alternative goods in many markets, so they may continue to buy certain goods when their price rise. Such inelasticity may be lessened in the long run as consumers acquire greater knowledge of markets. Definition of market. Market क्या है? In a market, it is defined widely. Example food. There are likely to be fewer alternatives and so defined will tend to be inelastic. In contrast, if a market is specified narrowly, orange drink, there will probably be many brands available, thereby creating elasticity in the demand for these brands. तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को? प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन द गुड, सब्स्टिट्यूट्स, नेसेसिटी, हैबिट, टाइम. फिर इलस्ट्रेशन टू प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, वही यहाँ पे हमने पढ़ा, वही अवेलेबिलिटी सब्स्टिट्यूट्स, proportion of income spent on item, necessity, time. ठीक है. Test your understanding 3. The government of country C provide free medical treatment to all citizen. तो जो कंट्री सी की जो गवर्नमेंट है फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दे रही है उसके सिटीजन्स को. फॉर मोर affluent citizen, a small charge is made if they need medication. The government has recently decided to increase this charge by a moderate amount to reflect the increasing cost of the medicine. What effect is likely to have on demand for medicine leading countries से? तो क्या इफेक्ट आएगा डिमांड, क्या इफेक्ट आएगा डिमांड फॉर मेडिसिन, मेडिसिन की डिमांड में क्या इफेक्ट आएगा कंट्री सी के अंदर? तो यहाँ पे इफेक्ट आएगा वो है इन इलास्टिक, जिसका करेक्ट आंसर है इन इलास्टिक. जो डिमांड, जो मेडिसिन की डिमांड में अफेक्ट आएगा वो है इन इलास्टिक. दिस इज बिकॉज मेडिसिन इज लाइकली टू बी हाईली इन इलास्टिक. करेक्ट आंसर इज इन इलास्टिक. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. व्हाट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? Cross elasticity of demand measure the sensitivity of demand for one good to changes in the price of another good. Cross elasticity of demand measure the sensitivity of demand for one good to change in the price of another good. जब एक another goods की प्राइस में चेंज आता है तब
दूसरे गुड्स की डिमांड में भी चेंज जाता है। तो मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड फॉर वन गुड टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर गुड। जब हम एक अनदर गुड्स की प्राइस में चेंज करते हैं, जो पहले वाला गुड्स है उसकी डिमांड में भी क्या जाता है, चेंज हो जाता है। द फॉर्मूला फॉर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड ए, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड बी। जब गुड बी की जब गुड बी की प्राइस में चेंज आ गया, तो ऐसे में गुड्स ए की क्वांटिटी डिमांड में भी क्या आ गया, चेंज आ गया। दिस इज नॉन एज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द साइन ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, when looking at price elasticity of demand earlier, a key consideration was whether the figure was greater or smaller than 1 with elasticity, cross elasticity of demand. Key issue is the sign, whether the elasticity is positive or negative. In the preceding activity, the cross elasticity demand between butter and margarine was positive. This is because butter and margarine are substituted. When the price of margarine went down, demand for margarine rose and demand for butter fell. Consumers switched to buying more cheaper margarine instead of butter. In other words, the price of margarine and demand for butter move in the same direction. Cross elasticity of demand is positive. Conversely, the cross elasticity of demand between complements is negative. Consider gas central heating and gas. If the price of gas central heating fall, demand for gas central heating would rise. Gas central heating and gas are complementary, so demand for gas is likely to rise. The price of gas central heating and demand for gas move in opposite direction, so cross elasticity of demand of complements is negative. The cross elasticity of demand substitute is positive. तो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड सब्स्टिट्यूट के केस में पॉजिटिव होता है और कॉम्प्लीमेंट्स के केस में नेगेटिव होता है। तो ये अभी हमने पढ़ा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट टॉपिक, सप्लाई, द सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म। A supply curve show how many units producer would be willing to offer for sale at different prices over a given period of time। तो सप्लाई क्या होता है? सप्लाई कर्व जनरली एक प्रोड्यूसर ने कितनी यूनिट प्रोड्यूस किए और वो अपनी इच्छा से कितनी यूनिट्स को विलिंग टू ऑफर सेल करता है different prices over a given period of time. This is known as supply. The supply curve of a firm is underpinned by the desire to make profit. It demonstrates what a firm will provide to the market at certain prices. If the price that goods can be sold at increases, each unit will make more profit for supplier. अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो ऐसे में हम सप्लाई भी ज़्यादा करेंगे, इससे हमको ज़्यादा प्रॉफिट्स होगा। तो जब भी प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लायर ये सोचेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा सेल करूँ, मीनिंग दैट दे विल विश टू मैन्युफैक्चर और सप्लाई मोर यूनिट्स फॉर द मार्केट। दिस मीन्स सप्लाई कर्व टेंड टू बी अपवर्ड। तो सप्लाई कर्व कैसा होता है? अपवर्ड। सप्लाई कर्व का शेप कैसा होता है? अपवर्ड्स, अपवर्ड, अपवर्ड कर्व, कर्व टेंड टू स्लोप अपवर्ड। जैसे जैसे हमारी प्राइस बढ़ेगी, जैसे हमारी प्राइस इंक्रीज होगी, ऐसे हम ज़्यादा सप्लाई करेंगे। जैसे हमारी प्राइस कम होगी, डिक्रीज होगी, ऐसे हम कम सप्लाई करेंगे। तो इसका कर्व होता है अपवर्ड सप्लाई का। अब सप्लाई की कंडीशन क्या है? कंडीशंस ऑफ सप्लाई, अ चेंज इन फैक्टर अदर देन द प्राइस विल मूव सप्लाई कर्व इटसेल्फ। An upward shift of supply. This means that the cost of supply has increased. इसका मतलब ये कि आपकी सप्लाई यहाँ पे इंक्रीज हो गई है। At existing price, less will now be supply, as shown on the upward sloping elastic supply curve. At price P and quantity supply fall from Q to Q1. तो क्वांटिटी सप्लाई यहाँ पे क्या हो रही है? हमारी कम हो रही है। सबसे पहले Q थी, फिर क्या हो गई है? Q1 हो गई है।
तो क्वांटिटी सप्लाई हमारी फॉल हो रही है, सप्लाई कर शिफ्ट फ्रॉम, तो सप्लाई कर भी हमारा पे शिफ्ट हो रहा है S2 से S1। द रिजल्ट फ्रॉम किस वजह से? सबसे पहला हाई प्रोडक्शन कॉस्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से, इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से। The cost of production may increase because factor production more become more expensive. फैक्टर प्रोडक्शन एक्सपेंसिव है तो प्रोडक्शन की कॉस्ट भी क्या इंक्रीज हो गई है। ऐसे में दस कंडीशन सच एज हाई वेज कॉस्ट पर यूनिट, हाई इनपुट प्राइस एंड इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स will lead to reduction in supply। इसके समय सप्लाई की वाली कम हो रही। इनडायरेक्ट टैक्सेस, the imposition of an indirect tax is VAT, value-added tax, make supply at existing prices less profitable with an indirect tax. The cost of production are raised directly because the tax must be paid on each item sold. The profit margin is reduced by some varying amount as the indirect tax effect. A downward shift of supply. A shift in supply curve from S1 to S2 illustrate an increase in supply, with more being supplied at each phase, showing that the cost of production has fallen or lower profits are being taken. Lower unit cost किससे arise हो रही है? Technological innovation. The advancements of microchip technology lower the cost of computer, lead to large increase in supply. तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, तो इससे हमारी कॉस्ट कम आ रही है और हमारा सप्लाई भी क्या हो रही है? सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। मोर एफिशिएंट यूज ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्टर प्रोडक्शन, introduction of a shift system working might mean fuller use of productivity capacity, leading to lower unit cost. Improvements in productivity may be secured by maintaining output but with fewer workers. Lower input prices, such as cheaper raw material import, हम cheaper raw material को import कर रहे हैं, lower price components could bring down production cost, इससे production cost भी कम आएगी। Reduction or abolition of an indirect tax for an application or increase in subsidies। तो ये है हमारा सप्लाई, सप्लाई, अपवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई किस वजह से हो रहा है? हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, इंडायरेक्ट टैक्स। डाउनवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, efficient use of existing factor production, lower input prices for indirect taxes। Next topic is equilibrium। What is equilibrium? Whenever price and demand equal is known as equilibrium। जब हमारी प्राइस और डिमांड इक्वल हो जाती है उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। Now we have looked at demand and supply in detail. Let us consider how the price mechanism set a price. The way to see how market force achieve equilibrium is to consider what happen if the price is too high or too low। तो जहाँ पे हमारी सप्लाई और जहाँ पे हमारी डिमांड इस पॉइंट पे मीट कर जाती है उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। The graph show intent, demand and plan supply at a set of price is only at price P, demand and supply are the same. If the demand of consumer and the supply plan of seller correspond, then the market is deemed to be in equilibrium. Only at output Q and price P, plan of both seller and buyer realize. Q is the equilibrium quantity and P is the equilibrium price in this market. There is only one equilibrium position in a market. At this point, there is no tendency for changing market because the plan of both buyer and seller are satisfied. At price and output other than the equilibrium P and Q, either demand or supply aspiration could be fulfilled but not both simultaneously. For instance, at price P1, consumer only want Q1 output but producer are making Q2 output available. There is surplus excess supply being Q1 Q2 output. Assuming the condition of demand and supply remain unchanged, it is like that the buyer and seller will reassess their intention. This will be reflected in the short term by retailer having unwanted goods return made to manufacturers, reduced order and some products being thrown
away, and so supplier may be prepared to accept lower price than P1 for their goods. This reduction in price will lead to a contraction in supply. तो इससे contraction आता है and expansion in demand कब आता है? Until equilibrium is reached at price P. Conversely, at price P2, quantity demand Q2 exceed the quantity supply Q3. There will be shortage Q2 Q3, demonstrating the excess demand. This will be reflected in the short term by retailer having empty shelves, queues and increase orders. Furthermore, there may be high second hand values. For example, eBay supplier will respond by increasing price to reduce the shortage. This excess demand will thus lead to a rise in market price, and demand will contract and supply will expand until equilibrium is reached at price P. Test your understanding for when the price of gold is held above the equilibrium price. जब एक प्राइस इक्विलिब्रियम के ऊपर अबव चली जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्सेस डिमांड, शॉर्टेज ऑफ द गुड, सरप्लस ऑफ द गुड, इंक्रीज इन डिमांड, तो उसको हम कहते हैं सरप्लस ऑफ द गुड. Whenever price of a good held over equilibrium of price, इसका मतलब वहां पे सप्लायर ज्यादा सेल करेगा हाई प्राइस में. सप्लायर विल बी विलिंग टू सप्लाई मोर एट अ हायर प्राइस और कंज्यूमर डिमांड कम करेंगे. द कंबाइन इफेक्ट क्रिएट इससे कंबाइन इफेक्ट आएगा और इससे सरप्लस ऑफ द गुड्स होंगे. गुड्स हमारे ज्यादा सेल होंगे मार्केट में. द करेक्ट आंसर सी, सरप्लस ऑफ द गुड्स. Shift in supply and demand. As well as signaling information in a market, price act as a stimulant. The price information may provide incentive for buyer and seller. For instance, a price rise may encourage firms to shift resources into one industry in order to obtain a better reward for their use. For example, suppose the equilibrium is distributed when the condition of demand change, consumer tastes have moved positively in favor of the good, and new curve D1 show customer intention. Supply is initially Q at equilibrium and it is momentarily fixed, so market price is bid up to P1. However, producer will be respond to this stimulus by expanding the quantity supply, perhaps by running down their stocks. This expansion in supply Q2 reduce some of the shortage, bringing price down to P2, a new equilibrium position which is above the old equilibrium P. Now, then, if we had drawn the diagram with steeper supply and demand curve, then the price fluctuation would have been greater. Thus, more inelastic supply tend to give rise to greater price volatility in a particular market over the longer term. The long-term effect of this change in the market depend upon the reaction of consumer and producer. The consumer may adjust their preference and producer may reconsider their production plan. The impact of the latter on supply depend upon the length of the production period. Generally, the longer the production period, more inelastic supply is, more unstable price will be tend to be. Price act as a signal to seller on what to produce. Price rises with all other market condition unchanged will act as a stimulus to extra supply. Equilibrium price is where the plan of both buyer and seller are satisfied. तो ये हो गया हमारा शिफ्ट इन सप्लाई और डिमांड कि शिफ्ट सप्लाई शिफ्ट क्यों होती है और डिमांड, तो हमने इसके रीजन देख लिए. अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइस. मिनिमम प्राइस क्या होता है और मैक्सिमम प्राइस क्या होता है. देयर में बी ओकेशन equilibrium price established by the market forces of demand and supply may not be the most desirable price. With such case, the government might wish to set up price above or below the market equilibrium price. तो यहाँ पे गवर्नमेंट सेट करती है इक्विलिब्रियम के अबव और बिलो में
minimum or maximum price. What is minimum price? In certain market, government may seek to ensure a minimum price for different goods and services. तो जनरली गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि मिनिमम प्राइस हो डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज सर्टेन मार्केट्स में. It can do this is a number of way such as providing subsidies direct to producer. तो जनरली गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करवाएगी डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स को. कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी इन यूरोप. अल्टरनेटिवली इट कैन सेट अ लीगल मिनिमम प्राइस. स्टेचुटरी मिनिमम वेज. तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक मिनिमम वेज रख सकती है और एक मिनिमम प्राइस सेट करके रख सकती है मार्केट में. To be effective, legal minimum price must above the current market price. If the government set a minimum price above the equilibrium price, often called a price floor. तो मिनिमम प्राइस को हम क्या बोलते हैं? प्राइस फ्लोर. तो मिनिमम प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस के अबव मिनिमम प्राइस, उसको हम बोलते हैं प्राइस फ्लोर. देयर विल बी अ सरप्लस ऑफ सप्लाई क्रिएटेड. देयर विल बी अ सरप्लस ऑफ सप्लाई क्रिएटेड. तो ये है हमारा सप्लाई, ये है हमारा डिमांड. सेंटर पॉइंट है हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस. अगर इक्विलिब्रियम प्राइस के अबव या ऊपर है तो उसको हम बोलेंगे मिनिमम प्राइस, या इसको हम बोलेंगे प्राइस फ्लोर. इन द डायग्राम सरप्लस इज Q1 to Q2. Minimum price was applied in the labor market. It would be known as a minimum wage. Surplus would be the equivalent of unemployment, which would be a waste of a factor of production. If applied to physical goods, then price floor cause surplus of products which have to be stored or destroyed. It can lead to a misallocation of resources both in the product or the factor market, which cause lower economic growth. There also may be the temptation for firms to attempt to ignore the price floor, for example by informal arrangement with worker, which would lead to a further waste of resources in implementing such arrangement, as well as rising issue of fair treatment for the worker involved. In summary, government impose minimum price cause. इसके cause क्या क्या हो सकते हैं? First, excess supply. Second, misallocation of resources. Third, wastage of resources. तो ये होती है हमारी मिनिमम प्राइस. जब हम एक इक्विलिब्रियम के अबव कोई प्राइस रखते हैं वो होती है हमारी मिनिमम प्राइस. नेक्स्ट इज मैक्सिमम प्राइस. व्हाट इज मैक्सिमम प्राइस? Government may seek to impose maximum price control or price ceiling on certain goods or services. तो जनरली गवर्नमेंट इम्पोज करती है मैक्सिमम प्राइस बिकॉज कंट्रोल करती है प्राइस सीलिंग सर्टेन गुड्स और सर्विसेज पर. बेनिफिट्स कंज्यूमर और लो इनकम सो दे कैन अफोर्ड द पर्टिकुलर गुड्स. तो इससे बेनिफिट क्या है कंज्यूमर के लिए? जिनकी लो इनकम है वो इसको जनरली अफोर्ड कर सकते हैं गुड्स को, और इससे इन्फ्लेशन भी क्या होता है? कंट्रोल में होता है. इफ द गवर्नमेंट सेट अ मैक्सिमम प्राइस, जब एक गवर्नमेंट सेट करती है मैक्सिमम प्राइस बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, जब एक गवर्नमेंट सेट करती है इक्विलिब्रियम प्राइस के बिलो मतलब नीचे मैक्सिमम प्राइस, तो इसको हम बोलते हैं प्राइस सीलिंग. देयर विल बी अ शॉर्टेज ऑफ सप्लाई क्रिएटेड. यहाँ पे सप्लाई की शॉर्टेज होती है. तो ये हो गया हमारा सप्लाई, ये हो गया हमारा डिमांड, ये हो गई हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस, और इक्विलिब्रियम के बिलो इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम प्राइस. This shortage is Q1, Q2. A shortage of supply persists, then problem can arise. The limited supply has to be allocated by some means other than by price. This can be done by queuing, by rationing, or by some form of favoritism. For example, by giving preference to regular customer. The difficulty with any of these alternative mechanisms is they can be considered arbitrary and unfair by those who fail to secure the product. Consequences of the shortage can be emergence of black markets. This is where buyer and seller agree upon an illegal price which is higher than that which has been officially sanctioned at the maximum price. Maximum price can also lead to a misallocation of resources. Producer will reduce output of those products subject to price control as these products
are now relatively less profitable than those products where no price control exists. In the housing market, this may lead to fewer apartments for rent as landowners develop office blocks rather than residential houses. Alternatively, the quality of the product may be allowed to drop as a way of reducing cost when profits are constrained by price control. This failure to maintain property can mean that apartments fall into disrepair. In summary, government imposed maximum price. The government imposed करती maximum price. इसके cost क्या है? Shortage of supply, arbitrary ways of allocating a product, और misallocation of resources. तो मिनिमम प्राइस क्या होता है? जब एक गवर्नमेंट मिनिमम प्राइस सेट करती है इक्विलिब्रियम प्राइस के अबव, उसके ऊपर, उसको हम बोलते हैं मिनिमम प्राइस। और मैक्सिमम प्राइस क्या होता है? जब एक गवर्नमेंट सेट करती है मैक्सिमम प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस के बिलो, उसके नीचे, उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम प्राइस, उसको हम बोलते हैं प्राइस सीलिंग। तो हम मिनिमम प्राइस को बोलते हैं प्राइस फ्लोर और मैक्सिमम प्राइस को हम बोलते हैं प्राइस सीलिंग। द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एफ, द गवर्नमेंट जो कंट्री है उसने डिसाइड करा और इम्पोज करा है मिनिमम वेज सभी वर्कर के लिए, which is about the current average market labor rate. Which of the following potential consequence, इससे potential consequence क्या हो सकता है? तो क्या कंट्री एफ के अंदर एम्प्लॉयमेंट राइज होएगा, राइजिंग एम्प्लॉयमेंट विद इन कंट्री एफ, फॉलिंग कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंट्री एफ, लोअर सेलिंग प्राइस लीडिंग टू हायर डिमांड, या सप्लाई सरप्लस ऑफ लेबर क्रिएटेड विद इन कंट्री एफ। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, सरप्लस ऑफ लेबर क्रिएटेड विद इन कंट्री एफ। तो जब हमने मिनिमम वेज इंप्लीमेंट कर दिया तो इससे क्या आएगा? प्रोडक्शन ज्यादा आएगा, इंक्रीज द प्रोडक्शन कंट्री एफ के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ कॉस्ट। द रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाई और डिमांड इज not the only relationship explored by microeconomics. It is also examined how costs tend to vary over time. Short-term cost behavior. In the short term, microeconomists believe cost follow the law of diminishing return. तो शॉर्ट टर्म के अंदर क्या फॉलो करते हैं हम? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। एज इक्वल क्वांटिटीज ऑफ वन वेरिएबल फैक्टर ऑफ इनपुट, दिस इज लेबर और मटेरियल्स, आर एडेड टू अ फिक्स्ड फैक्टर. Output initially increased by a greater proportion, increasing return and causing the average cost per unit to fall. However, beyond a certain point, addition to output will begin to decrease and the average cost per unit will start to rise again. Short-term cost behavior. Suppose we increase the number of workers while keeping the number of machine constant. Initially, the extra worker will allow specialization and increase efficiency. This will cause average cost to fall. As we keep adding staff, however, they will eventually start getting each other, having to wait to access machine. System therefore become less efficient and the average production cost will begin to rise. Short-run average total cost curve. Short-run average total cost curve tend to therefore U-shape. तो शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व का शेप कैसा होता है? यू शेप. Short run average total cost curve therefore U shape following the law of diminishing return. तो ये है अपनी एवरेज कॉस्ट, ये है अपना आउटपुट, और ये हो गई अपनी शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व. कैसा है ये? यू शेप. फिर आता है हमारा लॉन्ग टर्म कॉस्ट बिहेवियर. इन द लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है? सारी कॉस्ट हमारी क्या रहती है? वेरिएबल. शॉर्ट टर्म में एक फिक्स और वेरिएबल. लॉन्ग टर्म में क्या होता है? इन द लॉन्ग टर्म ऑल कॉस्ट टेंड टू बी वेरिएबल इन नेचर. दिस इज बिकॉज नाउ पॉसिबल टू वेरी द क्वांटिटी ऑफ एनी फैक्टर दैट वी आर फिक्स इन द शॉर्ट टर्म. Eventually, however, as the business expand, it will tend to become less efficient at controlling cost due to poor management and pressure on supply. This effect is sometimes referred to as diseconomy of scale. Diseconomy of scale का मतलब क्या है? कि हमारी कॉस्ट ज़्यादा है
और उससे हमको बेनिफिट कम मिल रहा है एंड रिजल्ट इन द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजिंग. Illustration for long-term cost behavior. As a business grows, the number of units it produces will increase. This means that in the short term, the average cost of factory rent per unit will fall, as the fixed cost will be spread over a large number of units. Therefore, as the production increases, the total cost per unit falls. If the company continue to grow, it will eventually need to rent more and more factory space. As factory space becomes scarce, it will become more expensive to rent. This will push rent cost upward and will force cost per unit back up. This gives rise to a long-run average total cost curve, which is broadly similar to short-run average total cost curve. तो ये है हमारा एवरेज कॉस्ट, ये आउटपुट, और ये है लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व. Next topic, types of market. Types of market. Microeconomic model makes certain assumption about how the market operate. तो माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल ने कुछ सर्टेन assumption लगाए कि मार्केट ऑपरेट होता कैसे. There are three types of market. तो जनरली three types of market है that you will need to able to demonstrate knowledge of in the exam. Three types of market है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इंपॉर्टेंट. फर्स्ट, परफेक्ट एंड इनपरफेक्ट मार्केट. परफेक्ट मार्केट क्या होता है, इनपरफेक्ट मार्केट क्या होता है. अ परफेक्ट मार्केट एग्जिस्ट व्हेन द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर मीट. एक परफेक्ट मार्केट कब एग्जिस्ट करता है, जब इसके फॉलोइंग क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं. फर्स्ट, लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर एंड सप्लायर, none of whom have the power to dominate the market. तो यहाँ पे क्या होता है, परफेक्ट मार्केट में जनरली लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर और सप्लायर होते हैं और किसी के पास भी पावर नहीं होती है मार्केट पे डोमिनेट करने की. none of whom have the power to dominate the market. The products or services sold by all supplier are identical homogeneous. जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज हम परफेक्ट मार्केट में सेल करते हैं, जो सप्लायर सेल करते हैं, वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं और होमोजीनियस होते हैं. There is a perfect information. All customer and supplier have complete information on the price their goods and services are being sold at elsewhere in the market. तो परफेक्ट मार्केट के अंदर कस्टमर और सप्लायर के पास कंप्लीट नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन या परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है गुड्स और सर्विसेज के बारे में. नो बैरियर टू एंट्री टू और एग्जिट फ्रॉम द मार्केट. यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है एंट्री और ना ही और एग्जिट फ्रॉम द मार्केट. दिस कॉम्पिटिटर कैन इजीली एंटर एंड एग्जिट द मार्केट. कॉम्पिटिटर इजीली एंटर हो सकते हैं और एग्जिट हो सकते हैं मार्केट में, कोई बैरियर यहाँ पे नहीं है. दिस इज सीन एज बिंग द आइडियल मार्केट पोजीशन. इफ एनी ऑफ द फैक्टर अबव नॉट होल्ड ट्रू, द मार्केट इज डिस्क्राइब एज इनपरफेक्ट. अगर इनमें से कोई भी फैक्टर सही नहीं है तो ऐसे में मार्केट क्या हो जाता है, इनपरफेक्ट. In the real world, most market are imperfect. रियल वर्ल्ड और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में मार्केट क्या है, इनपरफेक्ट. Perfect market tend to be assumed when looking at price elasticity of demand. Equilibrium is only likely to happen in a perfect market. You need to be aware of three public forms of imperfect market: monopolies, monopolistic competition and oligopoly. तो imperfect market के थ्री स्पेसिफिक फॉर्म्स है: मोनोपोलिस, monopolistic competition and oligopolies. Each of these forms depend on how organization compete within the market. Competition is an important concept in economics and refer to the rivalry
among a seller as they try to increase their profits, sales volume or market share by varying their marketing mix, such as price, product, promotion or place. First, we shall start monopoly market. Monopoly occur when one company control all or nearly all of the market for a particular product or service and no major competitor. मोनोपोली, मोनो का मतलब होता है सिंगल, पोली का मतलब होता है सेलर। तो मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर। तो मोनोपोली एक ऐसा मार्केट है जहां पे एक कंपनी कंट्रोल करती है पूरे मार्केट को। तो मोनोपोली एक ऐसा मार्केट है जहां पे एक कंपनी कंट्रोल करती है पूरे मार्केट को फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज। मोनोपोली के अंदर कोई मेजर कॉम्पिटिटर्स भी नहीं होता है। तो मोनोपोली के अंदर कौन आता है? सिर्फ एक सिंगल सेलर जो पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है प्रोडक्ट और गुड्स और सर्विसेज, और यहाँ पे कोई मेजर कॉम्पिटिटर्स भी नहीं होते। मोनोपोली का बेस्ट एग्जांपल है कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड भी एक कंपनी है जो पूरे मार्केट को कंट्रोल करती है प्रोडक्ट और सर्विस, और ना ही इसका कोई मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं। इस मार्केट को हम बोलते हैं मोनोपोली। तो मोनोपोली के कुछ फीचर्स हैं। द की फीचर इंक्लूड ओनली वन मेजर सप्लायर इन द मार्केट। तो मोनोपोली के अंदर सिर्फ एक मेजर सप्लायर होता है मार्केट के अंदर। नो क्लोज सब्सटीट्यूट आर अवेलेबल फॉर दिस सप्लायर प्रोडक्ट्स, और ना ही यहाँ पे कोई क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल होता है फॉर सप्लायर प्रोडक्ट। द सप्लायर इज देयर फॉर फ्री टू सेट प्राइस ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन। लैक ऑफ कंपटीशन के कारण सप्लायर अपने अकॉर्डिंग प्राइस को सेट कर सकता है, फ्री टू सेट प्राइस ड्यू टू द लैक ऑफ कंपटीशन। दिस सिचुएशन इज ऑफन कॉज्ड बाय हाई बैरियर टू एंट्री फॉर द मार्केट। तो इस सिचुएशन से यहाँ पे हाई बैरियर है, यहाँ पे कोई इजीली एंटर नहीं कर सकता है मार्केट के अंदर। हाई बैरियर टू एंट्री फॉर द मार्केट और ड्यू टू गवर्नमेंट लेजिस्लेशन। सेकेंड, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है, this type of market occur when a business has many different competitor, but each offer a somewhat differentiated products. तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है जनरली जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स है, और हर एक कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएट प्रोडक्ट सेल करता है मार्केट में। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर ये इंपॉर्टेंट वर्ड है डिफरेंशिएट प्रोडक्ट। यहाँ पे हर एक डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स डिफरेंशिएट प्रोडक्ट को सेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेस्टोरेंट एग्जिस्ट इन सच अ मार्केट, ईच रेस्टोरेंट इज ट्राइंग टू अट्रैक्ट द सेम कस्टमर। कस्टमर से सेम है, परंतु जो डिश है, जो उनका फूड है, वो क्या उनके लिए एक डिफरेंशिएट प्रोडक्ट है, बट ईच वन ऑफर डिफरेंट मेनू ऑप्शन कुक इन अ डिफरेंट वे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन टिपिकली हैज द फॉलोइंग फीचर्स। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का बेस्ट एग्जांपल है रेस्टोरेंट्स, क्लोथिंग स्टोर्स। Each business make independent decision about the product it offer and price it charges. There are no major barrier to entering or leaving the market. Products are differentiated between each business, meaning that they can charge more or less than their competitors. Customer will be willing to spend more if they feel that one business has a product that is better than those sold by rival. Due to the large amount of competition in the market, there is typically significant advertising expenditure by all the business in the मार्केट। थर्ड, ओलिगोपोलीज। ओलिगोपोली क्या है? ओलिगोपोलीज, ओलिगोपोलीज आर अनदर फॉर्म ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट where the market is controlled by a small number of organizations. Oligopoly are another form of imperfect market where the market is controlled by a small number of organization. तो ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे मार्केट कंट्रोल करते हैं फ्यू नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फ्यू नंबर ऑफ सेलर। ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे कंट्रोल करते हैं फ्यू नंबर ऑफ सेलर। मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय अ स्मॉल नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज ओलिगोपोली। इसका बेस्ट एग्जांपल है द एयरलाइन इंडस्ट्री। While there is no precise number, typically the market must be dominated by between 2 and 6 different firms for it to be classed as an oligopoly. If only two firms dominate the market, उसको हम कहते हैं duopoly. The dominant position of the business is an oligopoly will tend to market if difficult for new firm enter the market. New firm के लिए यहाँ पे difficulty होती है,
give them significant influence over the price of goods and services that they sell. तो टाइप्स ऑफ मार्केट अभी हमने देखे, एक होता है परफेक्ट, एक होता है इनपरफेक्ट। तो परफेक्ट मार्केट के अंदर लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर एंड सप्लायर होते हैं, साफ सबके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल होमोजेनियस होते हैं, वहाँ पे कस्टमर और सप्लायर के पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है, और जनरली वहाँ पे नो बैरियर टू एंट्री और एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। इजीली एंटर कर सकते हो और इजीली आप एग्जिट कर सकते हो मार्केट से। फिर हमने पढ़ा इनपरफेक्ट मार्केट क्या होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा मोनोपोली क्या होता है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, पोली का मतलब होता है सेलर। मोनोपोली इज इक्वल्स टू सिंगल सेलर। तो मोनोपोली एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे एक कंपनी पूरे मार्केट को कंट्रोल करती है और वहाँ पे इसका कोई मेजर कॉम्पिटिटर्स नहीं होता। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स हैं और डिफरेंशियल प्रोडक्ट को सेल करते हैं। दिस इज नॉन एज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ओलिगोपोली, ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे मार्केट कंट्रोल होता है फ्यू नंबर ऑफ सेलर, या market is controlled by a small number of organization. This is known as oligopoly. Monopolies. Many pharmaceutical company enjoy monopoly in the provision of certain medicine. This is due to high cost of research, development and testing which create barrier to other company developing similar drugs. In addition, as new medicine are usually protected by patients, it may be impossible for competitor to provide legal version of the same drugs. This allow pharmaceutical pharmaceutical company charge relatively high price for their products. Test your understanding 6. Consider the following statement. Which statement is correct? Not all items being bought and sold in market have to be identical for it to be perfect. False. Monopoly are a form of equilibrium. False. दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। करेक्ट आंसर इज डी, नीदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अभी तक हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा पढ़ लिया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने पूरा डिटेल में कर दिया है। अब अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। जनरली मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरे एज अ होल इकोनॉमिक की बात करते हैं। मैक्रो इकोनॉमी में हम एज अ होल एग्रीगेट डिमांड और होल एज अ इकोनॉमिक की बात करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिफाइनिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? Rather than examining the behavior of individual firm and individual, macroeconomics focuses on the working of the economy as a whole including। तो जनरली मैक्रो इकोनॉमी किस पे फोकस करता है? वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। तो मैक्रो इकोनॉमी हम किसको इंक्लूड करते हैं? पूरा हमारी इकोनॉमी को। तो इकोनॉमी एज अ होल और एग्रीगेट डिमांड, जैसे कि मैंने आपको ही बताया द ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस। ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड कितनी है गुड्स और सर्विस की, इसको इंक्लूड करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, नेशनल आउटपुट और नेशनल प्रोडक्ट, सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टोटल इनकम अर्न बाय प्रोवाइडर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, नेशनल इनकम। फैक्टर कौन कौन से होते हैं? लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो फैक्टर, लेबर को हम क्या देते हैं? वेजेस। लैंड पे क्या आता है? रेंट। लैंड पे क्या आता है? रेंट, उसकी इनकम हो गई। कैपिटल पे क्या आता है? इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योरशिप पे क्या मिलता है उसको? प्रॉफिट। तो किसी भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। मनी स्पेंट इन परचेसिंग नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट पॉलिसी। द प्रॉब्लम ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। स्केयर रिसोर्सेज की प्रॉब्लम क्या है? गिवन दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड, स्केयर रिसोर्सेज लिमिटेड है, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक एवरीथिंग एवरीवन वुड वांट। इसका मतलब ये नहीं कि जो कुछ भी चाहेगा उसको चीज मिल जाएगी, रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड, और वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। ऑल सोसाइटी आर thus faced with a fundamental economic problem. What goods and produce should be produced? कौन से goods और service हम produce करें?
कितनी क्वांटिटी में करें, हु शुड मेक देम, कौन इसको बनाएगा, हु गेट्स द आउटपुट। द मार्केट इकोनॉमी इज वन अप्रोच टू डीलिंग विद दिस प्रॉब्लम। In a market economy, interaction between supply and demand market forces determine what it is made, in what quantity, and who gets the output. Patterns of economic activity are determined by the decision made by individual consumer and producers. In its purest form, this would imply no government intervention in the economy. In reality, most modern economics are a mix of free markets and government intervention to provide public service such as health and education. Macroeconomic policy. While some economists advocate a free market, one without government intervention, मतलब कि वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी. In reality, most government intervene through various macroeconomic policy in attempt to improve the performance of the economy. तो some economists ने कहा है कि मार्केट क्या है, फ्री है, वहाँ पे गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए, वन विदाउट गवर्नमेंट इंटरवीन. पर जनरली रियलिटी में गवर्नमेंट इंटरवीन करती है वेरियस मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू. क्या इंप्रूव करना चाहती है, हमारी परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी को इंप्रूव करना चाहती है. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, सबसे पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी. हमारी जो इकोनॉमी है उसमें प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी क्या हो, इंक्रीज हो. लो इन्फ्लेशन, एंश्योरिंग दैट प्राइस रिमेन स्टेबल एंड सस्टेनेबल, एंश्योर करें कि जो प्राइस है वो स्टेबल रहे और सस्टेनेबल रहे. हाई एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, गेटिंग हैज मेनी पीपल इनटू वर्क इज पॉसिबल. सस्टेनेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, मैनेजिंग ट्रेड विद अदर कंट्रीज. We will look at this objective in more detail below. Test your understanding 7. Which of the following is not an objective of macroeconomic policy? इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है मैक्रोइकोनॉमिक पॉलिसी का? इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक पॉलिसी. इकोनॉमिक ग्रोथ है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, लोअर लेवल ऑफ टैक्सेशन, ये मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव नहीं है. द करेक्ट आंसर इज सी, लोअर लेवल ऑफ टैक्सेशन. The level of business activity in the economy. While the level of activity with a particular industry will depend on a specific pest issue, the overall level of activity in an economy and therefore its growth can be predicted by reference to several key factors. एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, हमारे पूरे इकोनॉमी की डिमांड, गुड्स और सर्विस. दिस इज द टोटल डिमांड फॉर कंट्री आउटपुट. तो एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, हमारी कंट्री की टोटल डिमांड इज नॉन एज एग्रीगेट डिमांड. तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या है, AD इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M. एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन, कंज्यूमर स्पेंडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस डिमांड फ्रॉम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. दिस मीन्स एग्रीगेट डिमांड consumer spending C plus investment by firm I plus government spending plus demand from export minus imports. Higher demand can result in firm increasing output. Example, by hiring more staff to meet the demand, leading to growth in the economy. High demand रहेगी इसका मतलब क्या, आउटपुट भी ज्यादा बनेगा, फर्म इंक्रीजिंग आउटपुट. हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ को हायर करेंगे तो इससे हमारी जो डिमांड है वो मीट करेगी और इससे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ भी होगी, लीडिंग टू ग्रोथ इन द इकोनॉमी. कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, दिस इज द डिग्री ऑफ ऑप्टिमिज्म दैट कंज्यूमर और बिजनेसेस फील अबाउट द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एंड देयर ओन पर्सनल फाइनेंशियल स्टेट. Higher consumer confidence means that are willing to spend more on goods and services, normally leading to growth in aggregate demand. High business confidence will result in increased level of investment in new factory and machinery, for example, also increasing aggregate demand. Confidence can be reduced by a number of factors such as high unemployment, high inflation, or even natural disasters. Capital
Greater availability of finance will allow business to raise the funds they need to expand. अगर greater availability of finance, अगर हमको finance अच्छे तरीके से मतलब greater availability तरीके से अगर हमको मिल जाता है तो इससे क्या होगा, बिजनेस है वो फंड्स को रेज कर सकता है और इससे वो एक्सपांड कर सकता है अपने बिजनेस को. दिस विल देयरफॉर टेंड टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड, इससे हमारी एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होगी. लोअर इंटरेस्ट रेट विल मेक कैपिटल चीपर, अगर इंटरेस्ट रेट कम होएगा तो इससे कैपिटल क्या होएगा, चीप होएगा. आल्सो टेंडिंग टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट बाय बिजनेस, इससे बूस्ट मिलेगा. Government policy. Government can increase or decrease the level of aggregate demand in economy by adjusting their fiscal policy. तो गवर्नमेंट भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है एग्रीगेट डिमांड को इकोनॉमी के अंदर अपनी फिजिकल पॉलिसी को एडजस्ट के थ्रू. गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन, फॉर इंस्टेंट इंक्रीज टैक्स रेट में हार्म कंज्यूमर कॉन्फिडेंस लीडिंग टू फॉल इन एग्रीगेट डिमांड. Exchange rate movements. A strengthening currency will make currency exports more expensive. अगर एक स्ट्रेंथिंग करेंसी है तो कंट्री के लिए एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा. A strengthening currency will make a country exports more expensive. पर इससे इंपोर्ट क्या हो जाएंगी, चीपर हो जाएंगी. बट इंपोर्ट्स विल बिकम चीपर. दिस वुड टेंड टू रिड्यूस द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, तो इससे हमारी इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड क्या आएगी, रिड्यूस होगी. Use of resources. New technology and more efficient working practices can improve business productivity and lower cost, thereby increasing business output. Higher level of education can also improve the efficiency and effectiveness of the workforce. The level of business activity in the economy के अंदर aggregate demand, consumer confidence, capital, government policy, exchange rate movements, or use of resources. Illustration 6. फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. ऐसे कौन से फैक्टर जो इन्फ्लुएंस कर सकती है हमारी बिजनेस एक्टिविटी को. 2008 ग्लोबल रिसेशन. वेट रिडक्शन, वेट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स. ड्यूरिंग द global recession of 2008, the UK government temporarily reduced the level of VAT to 15%. This had the effect of making consumer purchase cheaper, increasing their confidence and meaning that their wages were able to buy more goods. This was used as a way of stimulating the economy and boosting aggregate demand in a period when the UK economy was struggling. Interest rate. Meanwhile, the Bank of England started significantly reducing interest rates. This was an attempt to make it cheaper for business to borrow funds. The additional investment by business that is caused was also designed to boost aggregate demand. Consider the following two statements. Changing the level of taxation is only way that a government can affect aggregate demand. False. A weakening currency could provide a boost to the aggregate demand of a country. Correct statement. The correct answer is B. Statement number 2 is correct. Trade cycle. Many economies exhibit fluctuation in economic activity over time within an underlying trend of output growth. Some economists argue that one role of government is to smooth out of this pattern to avoid boom and bust years. तो ये है अपना रिसेशन, ये है ट्रफ, ये एक्सपांशन, ये पीक, फिर वापिस से चलता जाएगा. ये तो साइकिल है, ट्रेड साइकिल. रिसेशन, ट्रफ, एक्सपांशन, पीक, ये एक तरीके से ट्रेंड है. बूम एंड बस्ट दोनों एक ही, बूम और बस्ट. अ रिसेशन स्टार्ट व्हेन डिमांड बिगिन टू फॉल. एक रिसेशन कब स्टार्ट होता है, जब आपकी डिमांड गिरती है, कम होती है. फर्म रिस्पॉन्ड टू फॉल इन डिमांड बाय रिड्यूसिंग देयर आउटपुट, causing a decline in purchase of raw materials and increase in unemployment as workers are laid off. The reduction in demand will feed through into household income, causing this to fall too.
resulting in a further reduction in demand. The economy will quickly move into a slump with low business confidence and little incentive to carry out investment. Once in the slump, it can take a long time before the economy begins to recover. One of the most difficult things to restore business and consumer confidence. Eventually, through economic activity begin to pick up. It may be a new invention that tempts entrepreneurs to invest. It may be that replacement investment can be put off no longer for a war may force the government to inject expenditure into the economy. The extra investment will push up income, which will persuade consumer to spend, and this will induce it more investment, reducing unemployment. The economy will expand, pushing upward into a boom after some time. However, full capacity will be reached and demand will become stable. The reduction in investment start of the downward spiral once again. The main implication of boom and bust के main implication क्या है? Boom, bust. Individual and household. On the whole of a boom time, goods for household. तो ये household के लिए अच्छा है. वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होएगा, हाउस की प्राइस बढ़ेगी, हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होएगा, increasing consumer spending. But people may tempted to stretch our borrowing. Possible inflation, main problem with boom and bust. Bust में क्या आएगा? Main problem with boom and bust. First, job losses, people losing their homes, unable to pay a mortgage, fall in labor mobility due to negative equity, bankruptcy, low confidence. Firm growth होएगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, एक्स्ट्रा कंपटीशन एज न्यू फर्म आर एस्टेब्लिश. और बस्ट में corporate failure, fall in profits, excess capacity. Most people in firm would prefer strategic growth without the high risk associated with the extremes of boom and bust. Illustration 7, Trade Cycle. The Great Depression. The Great Depression was a worldwide economic downturn that lasted through most of the 1930s. It was focused on North America and Europe, but had knock-on effects around the world. Construction virtually stopped in many countries as demand fell sharply. Unemployment and homeless soared. City-based and heavy industry suffered by particularly badly. A rural area and farmers suffered price for crops fell by 40 and 60%. Mining and lodging area were also hit hard as there was little alternative economic activity. The effect of key economic issue. For this exam, you need to understand the four key economic issue and effect they can have on consumer and businesses. Economic growth. As outlined above, most government try to encourage economic growth. ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट क्या करती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को एनकरेज करती है, बढ़ावा देती है. दिस शुड हैव सेवरल बेनिफिट्स फॉर कंट्री. तो इसके लिए हमारे कंट्री के कुछ बेनिफिट्स हैं. मोर गुड्स डिमांड, ज़्यादा गुड्स की डिमांड रहेगी और ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस होंगे, ज़्यादा जॉब आएगी इकोनॉमी के अंदर और ज़्यादा पीपल एम्प्लॉय होंगे. ज़्यादा लोग अगर अर्न करेंगे ज़्यादा गुड्स को एफर कर सकेंगे और हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या वो सफर अच्छे से एफर्ट कर सकेंगे. तो अगर लोगों की ज़्यादा अर्निंग होगी तो वो गुड्स को, एक्सपेंसिव गुड्स को अफोर्ड कर सकते हैं और उनका हाई हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहेगा. In reality, through economic growth is not without its problem. This include the gap between rich and poor may widen. Rich और poor का gap है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. Benefits of growth not be evenly distributed. Growth may be in demerit goods such as illegal drugs. Growth may be at the expense of environmental exploitation of the poor. A rapid growth means rising income, often leading to increased demand for imports. This can significantly worsen aggregate demand in the economy. If demand for goods rise faster than production capacity with the country, goods will become scarce. This will often lead to rapid rise in prices, significantly increasing inflation. Government therefore have a delegate balancing act. They need to ensure that the country enjoys the benefit of economic growth while attempting to minimize the risk. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्फ्लेशन. व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई. Inflation is the rise in the price of goods and service
विद इन एन इकोनॉमी अवर टाइम। तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन का ये मतलब है कि जो गुड्स और सर्विस की जो प्राइस है वो क्या हुई, इंक्रीज हो गई, बढ़ गई है, राइज हो गई है within an economy over the time is known as inflation. It reduces the purchasing power of money. इससे हमारी पावर ऑफ मनी भी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, मीनिंग दैट ईच यूनिट ऑफ करेंसी, ईच पाउंड डॉलर फॉर एग्जांपल buy fewer goods and services. Most government want stable price and low inflation. This is because high level of inflation tend to following problems. ज़्यादा इन्फ्लेशन होएगा तो इससे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। एस प्राइस राइज, कंज्यूमर में परचेस फ्यू गुड्स। अगर प्राइस ज़्यादा आएगी तो कंज्यूमर ऐसे में कम गुड्स परचेस करेंगे, तो इससे हमारी जो इकोनॉमिक की ग्रोथ है वो रिड्यूस होगी। Employee will push for higher pay rise in order to match price rises. This can lead to problem for businesses. Other costs such as raw material will also rise for businesses, possibly leading to reduction in investment in production. Consumer confidence may damage due to uncertainty in the future price of goods and service. People on fixed incomes such as students or pensioners may find themselves worse off as their income will not rise through the cost of goods have increased. High inflation in one country may make cheaper imported goods more attractive to consumers and businesses. This can adversely affect the level of aggregate demand in the economy. Note that high inflation can have different effect on individual saver. People who save to spend later, a transaction motive, will save less in order to avoid the purchasing power of saving being encoded. तो ट्रांजैक्शन मोटिव का मतलब होता है कि जहाँ पे हम छोटा मोटा खर्चा करते हैं, अवॉइड द परचेसिंग पावर ऑफ सेविंग द इरोडेड। पीपल हु सेव फ्यूचर इमरजेंसी के लिए, जो फ्यूचर इमरजेंसी के लिए होता है उसको हम बोलते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव। सेव मोर एज दे विल बी अनसर्टेन हाउ मच मनी may need in future due to rapid price rises. In some cases, inflation may rise rapidly while economic growth slow. This is referred to as stagflation. Stagflation goes against traditional views of economics, which is outlined above, tend to suggest that inflation can often be caused by significant economic growth. This can cause a dilemma for governments as the action need to bring down inflation often lead to reduction in the level of economic growth in the economy. Unemployment. What is unemployment? Unemployment occurs when people are willing and able to work but cannot find a job. अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? तो अनएम्प्लॉयमेंट जनरली कंसर्न करता है जहाँ पे लोग काम तो करना चाहते हैं पर उनको काम मिल नहीं रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट अकर व्हेन पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जहाँ पे लोग अपनी इच्छा से काम तो करना चाहते हैं बट कैन नॉट फाइंड अ जॉब, पर उनको जॉब ही नहीं मिल रही, बट कैन नॉट फाइंड अ जॉब, इसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। नॉट दैट वेदर दे आर क्लेमिंग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, not is irrelevant. There is always likely to be some unemployment within an economy as people change job. However, most government try to keep unemployment low. This is because high level of unemployment cause the following problem. The government will suffer a loss of income from income tax and VAT as well as increased unemployment benefits payment. This may lead to increased tax on other workers, reducing their spending power. Workers may also worry about their own job security, damaging consumer confidence. Unemployed individuals will suffer a significant reduction in their income, and this may affect their self-image. It should be noted, business may benefit from high level of unemployment. High unemployment make it easy for business to find employee, a ready pool of level. ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा तो बिजनेस के लिए फायदा है, कम वेजेस पे लोग काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। ready of ready pool of labor to draw on. It may reduce the amount of wages they need to be offered to attract new member of staff. Existing staff may more willing to take lower pay increase. It will be difficult for them to find alternative work. These benefits will need to be weighted against the decreased demand for goods and service within the economy at high level of unemployment. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? A country balance of payment record all financial transaction made between individual। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जनरली हमारे सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करता है उसको रिकॉर्ड करता है, उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट।
बिजनेस एंड गवर्नमेंट विद फॉरेन कंज्यूमर एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो कंट्री का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो रिकॉर्ड करता है सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो कि इंडिविजुअल करता है, बिजनेस करते हैं, गवर्नमेंट करता है, फॉरेन कंज्यूमर करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करता है। उन सबको जो रिकॉर्ड करता है उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। द बैलेंस ऑफ पेमेंट स्प्लिट इनटू थ्री पार्ट्स: करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? करंट अकाउंट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। करंट अकाउंट के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। कैपिटल अकाउंट में, capital account net change in ownership of foreign assets such as loan between the government and other country. Financial account में cash flow. Often when people talk about the balance of payment, they are just referring surplus or deficit, import and export, current account. If country import exceed, if the country import exceed export, अगर कंट्री की इंपोर्ट ज्यादा है और कंट्री के एक्सपोर्ट कम है, इसका मतलब वहां पे ट्रेड डेफिसिट है। इसका मतलब वहां पे क्या है? ट्रेड डेफिसिट। और इफ एक्सपोर्ट एक्सीड इंपोर्ट, और अगर आपके एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से, इसका मतलब ट्रेड सरप्लस। इंपोर्ट एक्सीड एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि आप फॉरेन कंट्री से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हो और आपका एक्सपोर्ट कम है, तो इससे आपका ट्रेड डेफिसिट होगा। और एक्सपोर्ट एक्सीड इंपोर्ट्स का मतलब है कि आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो अपनी होम कंट्री में और आपके इंपोर्ट कम है, तो आपके लिए अच्छी बात है, तो ट्रेड सरप्लस। जनरली गवर्नमेंट would like to avoid long term balance of payment surplus or deficit. This is because there are problems with both. Trade deficits means that there is a near net outflow of cash flow from the country. In the long term, this is clearly not supportable. The country will drain its reserve and damage its internal credit rating. This will make it difficult for the country to raise further finance. Trade surpluses means there is a net flow of money into the country. This will increase the wealth of the country. This is done increasing demand for goods and service and can lead to significant rates of inflation and the problem that go along with this. Test your understanding now. Which of the following statement is true? Economic growth always brings benefits to all members of society. False. Economic growth can lead to increase in imports, increasing imports. True. Correct answer B. Economic growth can lead to an increase in imports. True. अच्छा, ट्रू और फॉल्स बताना। हाँ, पहला फॉल्स है। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑलवेज ब्रिंग बेनिफिट टू ऑल मेंबर ऑफ सोसाइटी, जरूरी नहीं है। फॉल्स। इकोनॉमिक ग्रोथ कैन लीड टू इंक्रीजिंग इंपोर्ट्स। ट्रू। Inflation does not affect those on fixed income as much those in employment. False. Inflation encourage investment in national economy. False. Correct answer B है, economic growth can lead to an increase in imports. Which of the following are consequences of unemployment? There is a less pressure for the government to increase taxes. There is reduced economic output. Yes, ये correct है. There is reduced economic output. थर्ड भी देख लेते हैं. There is greater inflationary pressure in the economy. No. Unemployment अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण क्या हो सकता है, उसके consequences क्या हो सकते हैं? Consequences का मतलब होता है परिणाम। तो अनएम्प्लॉयमेंट होने से क्या हो सकता है? तो देयर इज अ रिड्यूस इकोनॉमिक आउटपुट। करेक्ट आंसर इज बी, सेकंड ओनली। Correct answer B. There is less pressure for government to increase taxes. No. There is reduced economic output. Yes. Greater inflation pressure in the economy. No. Correct answer B. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी ऑप्शंस। So far, we have identified that government tend to have several major economic objectives. Government के बहुत सारे objectives हैं. For instance, most government want to encourage a steady economic growth, low inflation and unemployment, as well as running a balance of payment that is in equilibrium. How can a government accomplish this?
गवर्नमेंट में हैव टू मेन वे ऑफ अफेक्टिंग द इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट के पास ऐसे दो कंट्रोल है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के पास दो ऐसे वेज है जो इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकते हैं, अफेक्टिंग द इकोनॉमी। फर्स्ट इज फिस्कल पॉलिसी एंड सेकंड इज मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी रेफर टू द गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड स्पेंडिंग। तो फिस्कल पॉलिसी को कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट। कैसे कंट्रोल करती है? टैक्सेशन और स्पेंडिंग प्लान से। मॉनेटरी पॉलिसी को कौन करता है? जिससे कि हर एक कंट्री का अपना खुद का एक क्या होता है? सेंट्रल बैंक होता है। तो सेंट्रल बैंक होता है वो कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी को। Monetary policy refer to the management of the money supply, the total amount of money including currency in circulation and deposit in banks and building society in the economy. तो monetary supply या money supply क्या होता है? Total amount of money including currency जो हमारे सर्कुलेशन में और जो हमने डिपॉजिट करा है बैंक और बिल्डिंग सोसाइटीज में इन द इकोनॉमी। In particular, monetary policy involves the changing of interest rate or varying of the amount of money that bank need to keep in reserve. We will look at each of these type of policy option in turn. Fiscal policy options. The two key elements that government must plan for each year. First is income, second is expenditure. Income. This is primarily the money government raise from direct and indirect taxes, individual and business. इनकम क्या है? तो प्राइमरी मनी है गवर्नमेंट के लिए जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से आती है इंडिविजुअल और बिजनेस से। एक्सपेंडिचर क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट का खर्चा विल नीड टू स्पेंड प्रोवाइड सर्विस फॉर द पॉपुलेशन। दिस में इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ पुलिस एंड आर्मी, रोड एंड रेल बिल्डिंग एज वेल एज द वेजेस ऑफ सिविल सर्वेंट्स। सिविल सर्वेंट्स का मतलब हो गया आईएएस आईपीएस। In the medium to long term, most government would prefer to run a balanced budget. Generally क्या prefer करते हैं? Balanced budget. This occur when government income and expenditure are exactly match. However, rather than having a balanced budget, government may decide to run either a budget surplus or budget deficit. What is budget deficit? This occur when government spending is higher than the government income. बजट डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट की इनकम कम है और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज्यादा है, इसको हम बोलते हैं बजट डेफिसिट। दिस अकर व्हेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज हायर देन द गवर्नमेंट इनकम। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग यहाँ पे ज्यादा है और गवर्नमेंट की इनकम कम है, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग मोर देन गवर्नमेंट इनकम। दिस इज नॉन एज बजट डेफिसिट। टू फंड द डेफिसिट गवर्नमेंट विल नीड टू बोरो मनी। डेफिसिट के डेफिसिट के अंदर गवर्नमेंट को अगर मनी की रिक्वायरमेंट होती है तो बोरो करती है, जिसको हम बोलते हैं बोरिंग, रेफर टू एज पब्लिक सेक्टर नेट कैश रिक्वायरमेंट। जब गवर्नमेंट बोरो करती है उसको हम क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर नेट नेट कैश रिक्वायरमेंट। पब्लिक सेक्टर नेट कैश रिक्वायरमेंट पीएसएनसीआर। बाय रनिंग द बजट डेफिसिट द गवर्नमेंट इज इंजेक्टिंग मोर मनी इनटू द इकोनॉमी। ऐसे में गवर्नमेंट और इकोनॉमी के अंदर पैसा डालेगी that it is in taking out. This will help to boost aggregate demand and reduce unemployment. Because of this, running a deficit is a non-expansionary gap. तो deficit को हम क्या बोलते हैं? Expansionary strategy. It is often used a deflationary gap exists in the economy. These occur when the level of aggregate demand in the economy is insufficient to lead to full employment. Budget surplus. These occur when government spending is lower than the गवर्नमेंट इनकम। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग यहाँ पे कम है और गवर्नमेंट की इनकम ज्यादा है, इसको हम बोलेंगे बजट सरप्लस। दिस अकर व्हेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज लोअर देन द गवर्नमेंट इनकम। गवर्नमेंट की इनकम ज्यादा है और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग क्या है? लो है, उसको हम बोलते हैं बजट सरप्लस। बाय रनिंग द सरप्लस गवर्नमेंट इज टेकिंग मनी आउट ऑफ द इकोनॉमी, रिड्यूसिंग एग्रीगेट डिमांड। इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। तो अगर सरप्लस होएगा तो इसमें गवर्नमेंट पैसा निकालती है इकोनॉमी से बाहर, तो इससे हमारा एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। इट इज ऑफन यूज्ड व्हेन इन्फ्लेशनरी गैप exist in the economy. This occur when aggregate demand in the economy is higher than the country can supply,
leading to high inflation. Monetary policy. Monetary policy, like fiscal policy, can be described as an expansionary or contractionary. Expansionary policy increase the money supply in the economy. एक्सपांशनरी पॉलिसी से क्या होता है, मनी सप्लाई हमारे इकोनॉमी के अंदर बढ़ता है, हेल्पिंग टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट. अ कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी डिक्रीज द टोटल मनी सप्लाई. तो कॉन्ट्रैक्शनरी से मनी सप्लाई कम होता है, हेल्पिंग टू रिड्यूस डिमांड एंड ईजिंग इन्फ्लेशन. हाउ कैन गवर्नमेंट इंक्रीज और रिड्यूस द मनी सप्लाई? गवर्नमेंट कैसे इंक्रीज और रिड्यूस कर सकती है मनी सप्लाई? फर्स्ट, इंटरेस्ट रेट. Raising the interest rate will increase the cost of borrowing money for individual business. अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देगी तो ऐसे में जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज कर देगी तो लोग लोन नहीं लेंगे. तो रेजिंग द इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरिंग, तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी इंक्रीज हो जाएगी इंडिविजुअल और बिजनेसेस के लिए. दिस विल टिपिकली रिड्यूस द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय बिजनेस एंड एक्सपेंडिचर बाय इंडिविजुअल्स, helping to reduce aggregate demand in the country. In addition, high rate encourage individual to save money, further reduce expenditure. Interest rate in some countries such as UK, interest rate are set by central bank, Bank of England in the UK. In other countries, rates are directly set by the government. Second, reserve requirement. Most banks typically operate a fractional reserve system. This means that only a part of their deposit are kept in cash, as they assume that not all customers will want their money back at the same time. For instance, if a bank was required to give 10% of its deposit in cash for every 1000 deposit by its customer, it would be able to lend $900 of this to another person or business. Increasing the reserve requirement will reduce the amount of money that bank have available to lend. Limiting the money supply, the reduction in amount of money available to loan will also tend to push interest rate up. Open market operation, buying and selling its own bond. गवर्नमेंट अपने ही बॉन्ड पर सेल करती है मार्केट में ताकि मनी सप्लाई कंट्रोल हो सके. द गवर्नमेंट इज एबल टू एक्सर्ट सम कंट्रोल ओवर द मनी सप्लाई. By buying back its own bond, it will release cash back into circulation. When it sells bond, it receives cash in return, thereby taking it out of circulation. Quantitative easing. Quantitative easing is a relatively unconventional monetary policy that involves a country's central bank buying financial assets such as government and corporate bonds using money that it has generated electronically. Put more simply, the central bank has essentially printed itself new money, can spend, although in practice it is unusual for the money to actually printed. This has the effect of increasing the amount of cash within the economy, hopefully increasing aggregate demand. However, it can cause increased inflation and weaken a currency exchange rate, will both come into their own problem. It has been extensively by several countries in the alternate of banking crisis in 2008. अब कुछ इकोनॉमिक थ्योरी से उसको हम डिस्कस करेंगे. So monetary and fiscal policy provide several levers that the government can use to affect the economy. But when should it use these levers? The answer question is it depends. Several economists have proposed different theory about the best way for government to look after the economies of their countries. Different government may follow different theories. First, classical theory. तो क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है? The classical theory suggests that the government does nothing. क्लासिकल थ्योरी ये बोलती है कि गवर्नमेंट, क्लासिकल थ्योरी ये एज्यूम करती है, ये बोलती है कि वहां पे बिल्कुल गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं कर रही, वहां पे गवर्नमेंट है ही नहीं. क्लासिकल थ्योरी का मतलब है कि वहां पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं कर रही, नॉट इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट. द क्लासिकल थ्योरी सजेस्ट दैट द गवर्नमेंट डज नथिंग. क्लासिकल थ्योरी में गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है. इट इज वाइडली बिलीव बाय क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, economy would naturally move an equilibrium point with full employment.
क्लासिकल थ्योरी का ये कहना है कि इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम पे अपने आप आ जाएगी, वहाँ पे गवर्नमेंटल इंटरवेंशन नहीं कर रही। फॉर इंस्टेंस, इन द इवेंट ऑफ अ रिसेशन, द प्राइस ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स, वेज एंड रॉ मटेरियल्स would fall. This would lead to a reduction in the selling price of the products, which in turn would lead to increased demand for sell them. Increasing demand for these goods would lead to economic growth, pulling the economy out of recession. However, this theory was undermined by the Great Depression in the 1920s and 30s, when despite wages falling significantly, the economy did not respond by growing and seemed unable to pull itself out of recession. This failure of the classical approach led to rival economics theory emerging. Second, the Keynesian view, demand side. Demand side. This was discovered by John Maynard Keynes. Keynes argued government need to manipulate the level of aggregate demand within the economy. Keynes ने आर्ग्यू करा कि गवर्नमेंट को मैनिपुलेट करना चाहिए लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड विद इन द इकोनॉमी, डिमांड साइड इकोनॉमिक्स. He argued that government intervention was often needed in order to move the economy closer to ideal equilibrium point, one where there was a full employment. This was because if left to itself, the economy could get stuck at unfavorable equilibrium points, as had happened in the Great Depression. Practically, this means government should borrow money and inject into the economy around a budget deficit when economic growth needs to be stimulated. Government should increase taxation on a budget surplus to slow economy down if it was growing so fast and experiencing significant inflation. Multiplier. It is difficult to see how a government injection of fund into the economy could lead to a prolonged economic growth. If the government borrow 50 million and inject into the economy, it will some point have to pay back right this money. It will do this by taking 50 million out of economy through taxation. The net effect on aggregate demand, therefore national income, would appear to be zero as the initial injection is counterbalanced by leakage in the form of taxation. This analysis is incomplete as it neglects the fact that the injection of 50 million is spent many times in the economy, boosting national income by more than 50 million. एग्जाम्पल है, मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि अगर आपने इकोनॉमी के अंदर मनी को इंजेक्ट करा, तब वो मेनी टाइम्स क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, या तो वो अनदर पर्सन के पास पैसा चाहेगा, तो मेनी पर्सन, टू और मोर पर्सन के पास अगर आपका वो पैसा जाएगा कंट्री के अंदर, तो मल्टीप्लाई होगा आपस में. जैसे कि आपने 100 रुपये डाले और वो पैसा बहुत लोग के पास गया अपने हाथों में, तो पैसा क्या हो गया, डबल हो गया उसका, 100 करोड़ रुपया हो गया. तो उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर. मनी चेंज विल मेनी टाइप्स ऑफ पर्सन, टू और मोर, तो ये होता है मल्टीप्लायर. द मोनेटरिस्ट व्यू, सप्लाई साइड. Monetarists returned to the classical view. There was only one equilibrium point in an economy, the point where supply equals demand in all market in the economy. The only reason economy does not find this equilibrium is balance it will be hindered by market imperfections. The role of government is therefore to remove this imperfection, allowing the economy to naturally find its ideal equilibrium. Market imperfection can include inflation, government spending and taxation, price fixing, minimum wage legislation, regulation of markets, abuses of monopoly power. Monetary solution to economic problem are often described supply side economics as they focus on improving the steady factor of production in the economy, such as making it easier for business to access labor, raw materials, etc. Illustration at supply side policy. Between 1979 and 1984, the number of people claiming unemployment benefit in the UK rose just over 1 million to nearly 2.9 million people. The conservative government of the time, following monetary supply side policy, adopted the following policies: freed up market for both sectors and goods and services. This involved reducing the power of trade union and a reduction in number of state-owned monopolies, provide government-funded work retaining retraining schemes,
improve information provided by job center and employment agency, provide financial support and advice for worker willing to relocate, provide assistance and incentive for firm willing to relocate to area of high unemployment, lowered state benefit to make it less attractive to depend on state benefits rather than working, reform taxation with less emphasis on direct taxes argued to act as disincentive to work, effort, and the supply of enterprise, and more emphasis on indirect taxes. Which of the following statement is not consistent supply side policy? Concern नहीं है. Reduction in the employment benefit, running a budget surplus, improvement to job center, या reducing the power of union. Reduction in unemployment benefit, yes है. Running a budget surplus, ये नहीं है, no. Improvement to job center, yes. Reducing the power of union, yes. Correct answer B, running a budget surplus. Which one of the following would cause fall in level of aggregate demand in an economy? A decrease in level of imports, fall in amount people choose to save, decrease in government expenditure, decrease in the level of income tax. A decrease in government expenditure. Achieving policy objective. We have now identified the key factor that drive a government approach to managing the economy. A government will focus on trying to control growth, inflation, unemployment, and balance of payment using a variety of levers. These include both fiscal and monetary policy. Each government policy may use these levers in different ways. Depending on the economics theory they feel work the best. The final area we need to examine draw all three areas. How will a government practically manage its economic objectives? Growth. Policy to promote growth. Running a budget deficit. This is a classical Keynesian response to a recession. ऐसे में गवर्नमेंट इकोनॉमी के अंदर पैसा इंजेक्ट करती है, ट्रिगरिंग ट्रिगरिंग इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड, increasing the availability of production factor. This would be a classic monetarist policy and could include, for example, increasing the availability of labor through training schemes, cutting interest tax. This can be interpreted either a Keynesian policy, lowering the cost of borrowing to boost aggregate demand, or a monetarist policy by increasing the money supply. Other policy, this could include government grant and incentive to boost investment, protectionist measure to reduce imports. तो ग्रोथ की क्या क्या पॉलिसी थी? ग्रोथ को प्रमोट करने की रनिंग का बजट डेफिसिट, इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर. सबसे पहले हम बजट डेफिसिट को रन करें, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर को इंक्रीज करें, इंटरेस्ट को कट करें, और अदर पॉलिसी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉम्प्लेक्स. The government approach is likely to depend on type of unemployment that it want to tackle. First, cyclical unemployment. Cyclical unemployment क्या होता है? मतलब कि पूरे सर्कल टाइप का unemployment. This is also known as demand deficit. Cyclical unemployment को हम बोलते हैं demand deficit, demand deficient, persistent और Keynesian unemployment. तो cyclical unemployment होता क्यों है? Cyclical unemployment होता क्यों है? This is also known as demand deficient, persistent or Keynesian unemployment. It is caused by aggregate demand. It is caused by aggregate demand in the economy being too low to create unemployment opportunity for everyone that wants a job. तो cyclical unemployment generally हमारी aggregate demand economy के अंदर क्या है? लो है. हमारी economy के अंदर aggregate demand लो होने के कारण क्या होता है? cyclical unemployment होता है. तो aggregate demand in the economy being too low, इससे क्या है? क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, पर सब कुछ जॉब चाहिए इसके लिए, तो ये क्या है? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट.
It is caused by aggregate demand in the economy being too low to create employment opportunity for everyone that wants a job. It tend to occur in the burst period of trade cycle. The Keynesian solution would be to boost aggregate demand, perhaps by running a budget deficit. Monetarists would continue to remove market imperfection as they feel that this will naturally move the economy further towards full employment. फिर आता है हमारा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। साइकिलिकल अनएम्प्लॉयमेंट का बेस्ट एग्जांपल है कोविड-19। उस समय में हमारी जो इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड थी वो सबसे लो फेज पे थी। सेकंड, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। These refer to people who were short-term unemployed as they move between jobs. तो फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट जनरली क्यों होता है? तो फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट जनरली इसलिए होता है, फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जनरली जो पीपल होते हैं वो जनरली शॉर्ट टर्म के लिए क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉय हो जाते हैं, और वो अपनी एक जॉब से दूसरी जॉब के बीच में क्या करते हैं, मूव करते हैं और ट्रांसफर करते हैं। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है, जो पीपल होते हैं वो जनरली शॉर्ट टर्म के लिए अनएम्प्लॉय होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अपनी जॉब छोड़कर एक जगह से लेके दूसरी जगह पे जाते हैं एज दे मूव बिटवीन जॉब्स। इसके रीजन है क्विट करना, टर्मिनेशन देना, या पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं। इट इज नॉट नॉर्मली सीन एज अ प्रॉब्लम बट कैन बी डिटेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द इंफॉर्मेशन अनएम्प्लॉयड पीपल receive about job opportunities as supply side policy. Structural or technological unemployment. These occur when there is a structural change in the economy. जब हमारी इकोनॉमी के अंदर स्ट्रक्चरल चेंज आता है उसकी वजह से होता है ये, लीडिंग टू चेंज इन स्किल। स्किल चेंज हो गई, जो स्किल हमको रिक्वायर है अब वो स्किल हमको रिक्वायर ही नहीं है, अब कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, leading to change in the skill required and location where economic activity take place. Boosting aggregate demand Keynesian policy will have little impact on this type of unemployment. Monetary policy are likely to be more effective, such as government funded retraining schemes, tax breaks for redeveloping old industrial sites, business start-up advice and loans. Seasonal unemployment. These occur naturally in some industry. तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट जनरली किसी किसी इंडस्ट्री के अंदर नेचुरली अगर हो जाता है वेयर डिमांड फॉर गुड्स इज हाईली सीजनल, जहाँ पे जो गुड्स की डिमांड है वो हाईली सीजनल रहती है, सीजनल पर ही चलता है। फॉर एग्जांपल टूरिज्म एंड फार्मिंग, दिस कैन क्रिएट इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन रीजन heavily on such industries. Real wage unemployment, this is found in industry that are highly un Unionize. Union negotiation keep which artificially high the rate threat of industrial action, such as strike. The high wage bill that this create means that the number of people employed by the industry is reduced. Monetarists would see as a market imperfection, would look to reduce union power and abolish minimum wage agreements. Identify which type of unemployment. आपको बताना है कौन से टाइप का unemployment. A worker lost their job because introduction new technology. कौन सा टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है ये? स्ट्रक्चरल 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 अनएम्प्लॉयमेंट। आफ्टर द वॉल स्ट्रीट क्रैश बिलियन ऑफ अमेरिका अनेबल टू फाइंड द वर्क। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब्स इन कार इंडस्ट्री हैव बीन रिड्यूस्ड ड्यू टू स्ट्रांग यूनियन एंड हाई वेज। रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट, अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट जस्ट मेड redundant due to start a new job in 3 weeks time. Frictional unemployment, bar staff out of work in November in Spanish holidays. Or seasonal unemployment. Inflation. As with unemployment, there are a number of different causes of inflation. Government policy will depend which cause is dominant in the economy. Demand pull inflation. These occur when demand for goods and services in the economy is growing faster than the ability of economy to supply these goods and services. This will lead to rises prices. तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन जनरली क्या होता है? तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन जब डिमांड फॉर गुड्स और सर्विस की इकोनॉमी में क्या है, ज्यादा है। जब डिमांड फॉर गुड्स और सर्विस इकोनॉमी में क्या हो रहे हैं, वो जल्दी से ग्रो हो रहे, ग्रोइंग फास्टर देन द एबिलिटी ऑफ इकोनॉमी टू सप्लाई। मतलब कि डिमांड उनकी फास्ट तरीके से ग्रो हो रही है, किसके अगेंस्ट? एबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी टू सप्लाई दिस गुड्स, और उसकी सप्लाई कम है, तो ऐसे में क्या होगा, उसकी प्राइस बढ़ेगी।
This will lead to rise prices. Keynesian policy would focus on reducing aggregate demand through tax rises, cut in spending, and high interest rate. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ब्लैक फ्राइडे सेल्स. नेक्स्ट cost push inflation. This is where the underlying cost of factor of production rise. जहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या है राइज इंक्रीज हो रही है. दिस मेक गुड्स मोर एक्सपेंसिव टू मेक. ऐसे में हमारे लिए गुड्स को बनाना क्या है एक्सपेंसिव है. फॉर फोर्सिंग मैन्युफैक्चर टू raise their prices. For example, the increase in price of oil means the transportation and manufacturing cost will rise. This leads to the price of many other goods increasing. Imported inflation. इसका बेस्ट एग्जांपल है the 1917 oil crisis. Imported inflation. This can occur in country significant level of import. तो जनरली imported inflation कहाँ पे होता है जहाँ पे significant level of imports है. If the national currency weak, cost of. अगर आपकी नेशनल करेंसी वीक हो जाएगी तो ऐसे में आपके लिए जो इनपुट की कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी राइज हो जाएगी. तो इससे डोमेस्टिक इन्फ्लेशन आएगा. दिस विल बी रिड्यूस बाय पॉलिसी टू स्ट्रेंथनिंग द नेशनल करेंसी which are export below. Monetary inflation. Increasing the money supply increase the purchasing power of economy. अगर मनी सप्लाई बढ़ेगा इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो परचेसिंग पावर भी बढ़ेगी. Boosting demand for goods and services. If this expansion occur faster than expansion in the supply of goods and service, inflation can arise. Monetaries would argue this should be controlled through increased interest rate, which reduce the growth in money supply. Expectation effect. Many individual and business will have expectation goods and service will increase in price each year due to inflation. In order to protect themselves against these rises, wage prices will therefore be increased now. This may lead to an inflationary spiral, where inflation occur because there is an expectation that will occur. Illustration take inflation. What type of inflation each phrase describes it. Workers seek above inflation pay rises. Cost push inflation. Growth in demand for new outstripped supply. Demand pull inflation. Retailer have increased their price in advance of inflation figure to be published next month. Expectation inflation. Copper price have more than doubled on the world market this year, increasing the cost of electrical cables. Cost push inflation. ये तो आपको एक्सप्लेन करना है ठीक है. Balance of payment. In the country has a deficit on its balance of payment. There is a net outflow of fund from the country. This is clearly not supportable in the long term. Country will run out of money. The government can therefore look to reduce the deficit using either expenditure reducing or expenditure switching strategies. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है. हर कंट्री के अंदर डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है जगह नेट आउटफ्लो फंड्स फ्रॉम द कंट्री. जनरली सपोर्ट नहीं करता है लॉन्ग टर्म के अंदर और कंट्री रन भी नहीं कर पाती है लॉन्ग टर्म में. कंट्री विल रन आउट ऑफ मनी. तो गवर्नमेंट के पास इसको रिड्यूस करने के लिए दो है एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग और एक्सपेंडिचर स्विचिंग स्ट्रेटजीज. एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग स्ट्रेटजीज क्या होती है. These involve government deliberately shrinking the domestic economy in order to reduce the demand for inputs. तो यहाँ पे हम inputs की demand को reduce कर देते हैं. Reduction could be accomplished by contractionary monetary policy such as increase interest rate, increasing bank reserve requirement, etc. Running a budget surplus. Reducing the size of economy will also help to reduce inflation, reducing export price and making the country export more competitive. However, suppressing demand is likely to lead to increased unemployment. Expenditure switching strategies. This involve government trying to encourage consumer to buy domestically produced rather than import goods. The expenditure switching strategies में गवर्नमेंट क्या करती है. गवर्नमेंट एनकरेज करती है लोगों को और कंज्यूमर को क्यों जनरली डोमेस्टिक गुड्स जो हमने प्रोड्यूस करे उनको वो परचेस करें rather than imported goods. This could be accomplished by controlling import via tariff or quotas. Through this may bridge global free trade regulation, increasing export by subsidizing in exporters, lowering the exchange rate, making import more expensive and export more competitive. This is often referred to as currency devaluation. Which of the following policy for correcting a balance of payment
Deficit is an expenditure reducing policy. Answer number A is the correct answer, cutting the level of public expenditure. Which of the following might cause a country export to decrease? Exchange rate for a country currency fall, no. Reduction in other country tariff rate, no. Yes. A decrease in marginal propensity to import in other country. Correct answer C. Which of the following would not a correct balance of payment deficit? Revaluing the currency upward. इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट नॉट करेक्ट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, तो रीवैल्यूइंग द करेंसी अपवर्ड. तो यहाँ पे हमने पढ़ा एक्सटर्नल एनालिसिस, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो में हमने पढ़ा सप्लाई और डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कॉस्ट बिहेवियर, टाइप्स ऑफ मार्केट. मैक्रो में हमने इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिजिकल, मॉनेटरी, क्लासिकल सप्लाई साइड डिमांड, एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग और एक्सपेंडिचर स्विचिंग. अब हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू लीड टू डिमांड कर्व फॉर अ प्रोडक्ट शिफ्टिंग टू राइट, इंक्रीजिंग शिफ्ट इन डिमांड? चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम ऑफ कस्टमर. यस. इससे क्या आएगा? शिफ्ट हो जाएगा. चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम ऑफ कस्टमर्स. इसको तो सॉल्व करना है. मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ. डी आएगा 11,500. फॉर्मूला लगाना, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा. A product is price elasticity of demand 2.0, 2.0. Which of the following statement are therefore correct? Selling price of product is cut by 10%. Okay, demand will fall by 20%. Incorrect. Selling price of product rise by 10%. Demand will be fall by 20%. This is correct. Correct answer is B. Which of the following is not a factor that affect price elasticity of demand? कौन सा ऐसा फैक्टर है जो अफेक्ट नहीं करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? नॉट अ फैक्टर दैट अफेक्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. डेवलबिलिटी सब्स्टिट्यूट करता है, नेसेसिटी प्रोडक्ट सर्विस, ड्यूरेशन ऑफ चेंज, ड्यूरेशन ऑफ द प्राइस चेंज, ये भी है. द चेंज इन द नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड, ये नहीं है, इससे अफेक्ट नहीं होता है. करेक्ट आंसर इज डी. In the long term, business growth tend to become less efficient at controlling cost. What is the what is this effect known as? इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? This economics of scale. Aggregate demand is made up of investment by firm, government spending plus export. Identify the terms need to be placed 1 and 2. Okay. तो 1 की जगह है कंज्यूमर स्पेंडिंग और यहाँ पे आ जाएगा इंपोर्ट्स. Which of the following is a typical consequence of rapid economic growth? Rising inflation. Which of the following is an example of fiscal policy? Running a budget deficit is an example of fiscal policy. The government of country is concerned that economy is growing too quickly. Which of the following policy might they choose to implement in order to slow growth? तो कौन सी पॉलिसी हम implement करेंगे? Selling government bonds in open markets. The government of country H is planning to adopt a supply side approach deal with country high unemployment. Which of the following strategies is consistent with a supply side approach? Improve information available to unemployed to make it easier for them find to work. Correct answer is D. The following are policy government use in order to affect their national economics. Write down 4 options. Example monetary policies. The monetary policy कौन कौन सी? Interest rates, buying or selling government debt, altering bank reserve requirements और quantitative easing. तो monetary policy के example क्या है? Interest rate, buying or selling government debt, altering bank reserve requirement or quantitative easing. The following are possible effect of government interference in price of goods and service. Write down two of the 4 options could be caused by government setting maximum price goods or service which is below market equilibrium point.
Okay. Excess supply, waste of resources, एक तो है shortage of supply और एक misallocation of resources. The following sentence contain a which require the insertion of one of the following word: expansion, contraction, shortage, surplus. If a product is priced above the equilibrium point in the market, it will lead to producer having unsold unit. This will lead to a reduction in selling price. Along with 1 in the level of supply, the fall in selling price will lead to 2 in demand. Unit eventually equilibrium is reached. Select the word correctly filled graph above 1. Select A, B, C, D. Okay. तो इनमें से फर्स्ट में पूछा है, तो इसका आंसर तो है कॉन्ट्रैक्शन. और सेलेक्टिंग द वर्ड करेक्टली फिल गैप टू अबव, इसका है एक्सपांशन. करेक्ट आंसर इज बी एन ए. तो ये इसका आंसर होगा. Okay, we will complete chapter number 7, external analysis, economic factors. Thank you for watching this video. In our upcoming video, we will discuss further chapter. Thank you for watching this video.